Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare
Jaya Radha Madhav, Radha Madhav, Radha Madhav, Jaya Radha Madhav. Jaya Goradhai, 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 Jaya Goradhai. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada, Jai Prabhupada. Jai Jai Gurudev, 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 Jai Gurudev. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन ब्रज जनरंजन यशोदनंदन यशोदनंदन ब्रज जनरंजन यशोदनंदन यमुना तिरवनचारी यमुना जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा गीताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल নামিয়ে এরকম মুখের কাছে ইয়ে করে দেয় ওটা পুরো মুখ কাটা যাবে।
डिटेल्ड लेटर लिखा था जिसके आधार पर उन्होंने वेस्ट के अंदर कैसे तुलसी वर्शिप करते हैं पाश्चात्य जगत ने वैसा सब भक्तों को प्रशिक्षण दिया। प्रभु जी यहाँ पर रहते हैं, टीओपी की डिजाइनिंग सेवा के लिए आए थे, मायापुर में ही रहते हैं और माता जी अभी भी वृंदावन में रहती हैं। हरे कृष्ण। Hare Krishna. So first of all, we'll welcome Prabhu by chanting Hari Dhwani and Ulu Dhwani. Hari Bol! Hari Bol! Hari Bol! Okay. Hare Krishna. Too many people here, I'm afraid. इतने सारे लोग बैठे यहाँ पे, मेरे को डर लग रहा है। No more room. और जगह बची नहीं लग रहा है। In any case, any stories about Prabhupada would be relished. So I'm taking a few stories from this book I've gotten. तो श्रीला प्रभुपाद जी के बारे में कोई भी कहानी सुने वो आनंदमय होती है। मैं कुछ कहानियां इस पुस्तक से लेने जा रहा हूँ, आचार्य पुस्तक, जो कि प्रभु जी की पुस्तक है, जिसमें 200 सुंदर पेंटिंग्स हैं प्रभुपाद की। I want to bring forth some stories that are funny. Prabhupada has a sense of humor, which doesn't come across too quick. प्रभुपाद का सेंस ऑफ ह्यूमर, मजाक करने के जो एक प्रवृत्ति है बहुत ही अच्छी है। तो मैं कुछ थोड़ी सी मजाकिया स्टोरीज, कहानियां लेने वाला हूँ। The first story is that Prabhupada was in his room and servant outside was looking through the keyhole. तो एक कहानी है जिसमें प्रभुपाद जी अपने कमरे में थे और एक भक्त जो है वो की होल से, जो दरवाजे में जो चाबी लगाने वाला जो छेद होता है, की होल, वहां से देख रहे थे। So it's a normal thing. They want to check and make sure Prabhupada's okay. If you need something, they can go inside and cater to whatever Prabhupada needs. तो ये एक साधारण सी बात थी कि उस की होल, उस चाबी के छेद से झांकने की, क्योंकि हम श्रीला प्रभुपाद का ध्यान रखना चाहते थे हमेशा कि प्रभुपाद को कोई चीज की आवश्यकता तो नहीं है, प्रभुपाद ठीक हैं। So this devotee looking through the keyhole, and suddenly there's a big guy on the other side of the door. तो जो एक भक्त जो झांक रहा था उस छेद से, वो देखता है कि उस दूसरी तरफ दरवाजे के एक बड़ी सी आंख नजर आ रही है। Prabhupada looking back through the keyhole. प्रभुपाद जी वापस उसकी होल से देख रहे थे। Another occasion, the devotee was looking in on Prabhupada, and he saw a light that's coming from nowhere, hitting Prabhupada. And Prabhupada was effulgence, and it's like a diamond jubilee. It was shining, made out of diamonds, reflecting a lot of light. एक बार की बात और है, जब एक भक्त झांक रहे थे उस छेद में से, की होल में से, तो वहां पर उनको बहुत ही जगमग जगमग रोशनी आ रही थी, जैसे कि इतना ऐश्वर्य, इतना सोना, सुनहरे जैसी रोशनी चमक रही थी। So the devotee saw Prabhupada sitting there in this light coming from nowhere. His effulgence was mirroring, making at least 10 feet in any direction. तो वो रोशनी कहीं और से नहीं, श्रीला प्रभुपाद के दिव्य शरीर से जगमग 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 हो रही थी। प्रभुपाद जी बैठे हुए थे। Many devotees see Prabhupada's effulgence. He shines, it's like a light around his head. तो ऐसे ही दृश्य बहुत भक्तों ने देखा है कि जब श्रीला प्रभुपाद के चेहरे से जगमग जगमग, श्रीला प्रभुपाद जी के शरीर से ऐसा दिव्य तेज नजर आता हुआ। So he didn't want to disturb Prabhupada, so he backed away from the door. तो वो प्रभुपाद जी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उस दरवाजे को बिना खोले वहीं से झांक कर वापस आ गया। Then he looked again and saw Prabhupada rolling on the floor all by himself laughing. तो एक बार और उन्होंने देखा कि श्रीला प्रभुपाद हंस रहे हैं और जैसे जमीन पे लोटपोट कर रहे हो, लोटपोट मार रहे हो। Now, if you can understand what happened, Prabhupada's on the floor, rolling on the floor, laughing and joking and having a good time. तो आप समझ सकते हैं कि उस समय पे प्रभुपाद जब वो झांक रहे हैं भक्त दरवाजे की होल से, तो वहां पर प्रभुपाद जी हंस रहे हैं, जमीन पर हैं, लोटपोट कर रहे हैं और खुश हैं। So Prabhupada was
not, he wasn't saying anything, he was just rolling on the floor. वो कुछ बोल नहीं रहे, बस लोटपोट कर रहे हैं जमीन पर. So later that devotee didn't want to bother Prabhupada, he was curious. Srila Prabhupada, why were you rolling on the floor? तो उसके बाद वो भक्त बड़े ही इच्छुक थे जानने के लिए कि प्रभुपाद जमीन पे लोटपोट मार क्यों रहे थे. तो वो बहुत उत्सुक थे पूछने के लिए, प्रभुपाद से पूछना चाह रहे थे. Anybody know what his answer was? तो आप में से कोई भक्त जानते हैं कि क्या जवाब था प्रभुपाद का? Yes, one devotee knows. Anybody know? किसी को मालूम है तो बताइए. You know the answer, please tell the answer. Yes, Prabhu. Prabhupada said I was rolling on the floor, I was wrestling with Balaram. प्रभुपाद बोलते हैं कि मैं जमीन पे लोटपोट इसलिए मार रहा था कि मैं बलराम से लड़ रहा था. Nobody really knows who Prabhupada is. हमें किसी को मालूम नहीं कि प्रभुपाद वास्तविकता में है कौन. But he's got a sense of humor that's really funny. और प्रभुपाद का जो सेंस ऑफ ह्यूमर, जो हंसी मजाक का जो एक तरीका था, बहुत ही हंसमुख और बहुत ही हंसाने वाला है. Now, what kind of energy and strength you got to have to wrestle with Balaram? सोचिए कितनी शक्ति होगी जो बलराम से लड़ सके. Bahut Shakti, that's for sure. बहुत ज्यादा शक्ति है, ये तो पक्की बात है. So there are many stories. I'll just pick up a few in the book. तो बहुत सारी स्टोरीज है. मैं कुछ सी कहानियां लेने जा रहा हूँ इस पुस्तक से, जो प्रभु जी की पुस्तक है. One time, Prabhupada did 3 miracles in a matter of 5-10 minutes. एक बार की बात है, प्रभुपाद ने 3 चमत्कार किए 5-10 मिनट के अंदर. On that occasion, Prabhupada was worshiping his Guru Maharaj, Srila Bhaktisidhanta Saraswati Maharaj. Okay, one. Here's a picture of Srila Bhaktisidhanta on the chair with a cloth behind him, so he was being honored properly. A picture of Bhaktisidhanta on a chair with a cloth behind him, so he wasn't touching the chair. So there was a chair, एक कुर्सी था, where Srila Bhaktisidhanta Swami Thakur picture was there with a cloth. So एक Bhaktisidhanta Swami Thakur का चित्र था, तस्वीर थी टेबल पर, और उसमें कपड़ा रखा हुआ था. श्रीला प्रभुपाद जी के गुरु महाराज Bhaktisidhanta Thakur की तस्वीर. So in the worship he was doing, he was offering a tea lamp, then the major offering going on, he finally got to the conch shell, water. तो श्रीला प्रभुपाद उनकी पूजा अर्चना कर रहे थे, जैसे कि जो घी का दिया दिखाना और थोड़ा सा जो शंख था जिसमें जल था. So devotees were waiting to hear something from Prabhupada. तो भक्त लोग इंतजार कर रहे थे कि कुछ सुनने को, कुछ सुन सकें श्रीला प्रभुपाद से. So Prabhupada was doing the art teach and he had the water in the conch shell. He was asking for something to put it in the water. He asked for a bowl. He wanted a bowl to put the water in. तो श्रीला प्रभुपाद जब आरती कर रहे थे भक्तिसिद्धांत स्वामी ठाकुर का, तो वो जो शंख से जो थोड़ा सा जो पानी जो अर्पित करते हैं पूजा के समय पे, उसके बाद वो एक कटोरी, एक बाटी देख रहे थे कि वो पानी कहाँ पे डाल सके. So Prabhupada was kept repeating, bowl, bowl. प्रभुपाद बार बार मांग रहे हैं कि लाइए लाइए, कटोरी दीजिए, कटोरी दीजिए, कटोरी दीजिए. The devotees heard bowl, they went, hurry bowl, hurry bowl, hurry bowl. भक्तों को लगा कि क्या बोलना है, बोल बोल बोल, तो वो बोलते हैं हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल. It's not what he wanted a bowl, not a hurry down bowl. तो उसको प्रभुपाद जी को बोल, कटोरी चाहिए था, हरि बोल नहीं. So then he took the water in the conch shell and threw it about 10 feet. It landed right in the pot, Tulsi pot, without spilling another drop. The whole thing went directly into the Tulsi pot. तो प्रभुपाद ने जो है वो उस शंख से ऐसे करके दूर छिड़काव किया, और 10 फीट दूर जो एक घड़ा सा रखा था उसी में जाके सीधा सारा वो जल गया. So on different occasions, on the morning walks with Prabhupada, अलग अलग स्थानों पे, अलग अलग जगहों पे, जैसा कि कुछ सुबह की सैर मॉर्निंग वॉक्स पर. So on one occasion we came late, the car was already a little late, and Prabhupada was walking across the field. It was Los Angeles, on the river, and right next to the ocean. There's a park, and he was walking in the park.
तो लॉस एंजलिस में एक जो नदी थी, वहां पर उसके पास में गार्डन था। प्रभुपाद जी सैर कर रहे थे और गाड़ी जो उनको लेने आने वाली थी उसमें देर हो गई। Another day that was really significant was that everybody was crowded around Prabhupada in Los Angeles waiting for Prabhupada to give the class. तो एक बार की बात है जब यही इस समय पे जब लॉस एंजलिस में प्रभुपाद जी को क्लास देना है और आसपास बहुत सारे भक्तों ने उनको घेर रखा है। So I was asked to make the first murti of Prabhupada. तो मुझे कहा गया कि प्रभुपाद जी का पहला मूर्ति विग्रह बनाया जाए। So in preparation I started making drawings of Prabhupada. तो मैं तैयारियां कर रहा था कि प्रभुपाद का चित्र बनाऊंगा। Like a portrait, you do a person's face, you make a portrait, you draw the first lines and you add detail. तो जब आपको किसी का चेहरा बनाना है तो उसको पोर्ट्रेट बनाना पड़ता है, वो चेहरा कैसा दिखेगा उसकी एक चित्र बनाना पड़ता है। So I started making a drawing and I looked up at Prabhupada. Prabhupada was smiling a little bit. So then I started making a drawing. तो मैं ड्राइंग बनाने का, मैं चित्र बनाने का तैयारी कर रहा था और मैं नीचे देखकर बनाने की तैयारी कर रहा था तो ऊपर देखा प्रभुपाद जी की तरफ, तो थोड़ा सा प्रभुपाद जी मुस्कुरा रहे थे। So it wasn't Prabhupada anymore, it was somebody else sitting there. Prabhupada had changed his form. तो मैं देख रहा था कि मैं थोड़ी देर बाद जो बनाने लगा तो मैंने देखा ये तो प्रभुपाद नहीं, कोई और व्यक्ति, मैं क्या बना रहा हूँ, ये तो कुछ लगता है रूप बदल गया है। But it was Prabhupada, but I didn't recognize the face anymore. He had changed the face, complete different face. लेकिन मैं देख रहा हूँ कि प्रभुपाद का चेहरा जो मैं बनाना चाह रहा हूँ और प्रभुपाद जी का जो चेहरा है वो अलग हो रहा है। प्रभुपाद जी जैसे अपना चेहरा बदल रहे हैं। These are stories you don't normally hear about Prabhupada, but he was a shift changer. He could shift his appearance very clearly. Different people sitting there. तो Prabhupada. प्रभुपाद जो है वो आप लोग नहीं जानते होंगे, प्रभुपाद शेप चेंजर है। वे अपना रूप जो है वे बदलते हुए कि जैसा मैं बना रहा हूँ मुझे लग रहा है कि मैं बिल्कुल ही अलग व्यक्ति का चेहरा बना रहा हूँ। So I looked down at my drawing and I looked up again at a different personality sitting there again. तो मैं अपनी ड्राइंग में देखता हूँ नीचे कि मैंने क्या बनाया है, फिर ऊपर देखता हूँ कि प्रभुपाद जी कैसे लग रहे हैं, तो बिल्कुल ही मेल नहीं खा रहा है। I figured to give it up because there's no hope. I keep changing his face. I can't do anything about it. मैंने फिर हार कर छोड़ ही दिया कि छोड़ो, मैं नहीं कर पा रहा, प्रभुपाद जी का चेहरा बार बार बदल रहा है, यहाँ पर मैं कैसा हो रहा हूँ, मैं उम्मीद खो देता हूँ कि मैं कुछ बना पाऊंगा। It's a part of Prabhupada's humor. ये प्रभुपाद जी के जो ये हास्य कला का एक अंग है। So I said I'll try it tomorrow. I'll give it the next day. I'll try it again. तो मैंने सोचा चलो ठीक है, अगले दिन दोबारा से कोशिश करूंगा। So next day was worse. अगले दिन तो और ज्यादा हालत खराब हो गई। So Prabhupada had the ability to change his appearance at will. प्रभुपाद जी के पास ये क्षमता थी कि वे अपना रूप और ये चीजें बदल पा रहे हैं। I was lamenting the fact that I never got too close to Prabhupada. I was always packed around with sannyasis and TPC members who were close to Prabhupada, so there's no chance to get near him. Yeah, that was. Anyway, I gave up the drawing because I couldn't do it anymore. Prabhupada made it so clear that he's not going to be captured by anybody that quick in the drawing. तो मैंने फिर छोड़ दिया ड्राइंग बनाना। मैं समझ गया कि प्रभुपाद जी को कैप्चर करना मुश्किल है, तो मुझे ये चीज़ वहाँ पे समझ में आई। I learned this lesson from this incident that we cannot capture Guru without his mercy. तो मैं अपने गुरु की कृपा के बिना मैं गुरु को कैप्चर नहीं, मैं उनको उतार नहीं सकता अपने इस कागज पर उनके चेहरे को। So Prabhupada turned, looked down at me. I was looking at Prabhupada. He was giving a class. But in my mind, he could talk to you. Mind, different ESP it called it. तो प्रभुपाद जो है जब वे क्लास दे रहे थे तो उस समय पे मैं अपना वहाँ पर देखते हुए उनकी तरफ देख रहा हूँ। Prabhupada said, "You're not so easy to capture me. You're going to have to do better than that."
तो ऐसा लग रहा है जैसे हम मन ही मन बात कर रहे हैं, मैं प्रभुपाद जी से, प्रभुपाद जी मुझसे, और वो मन ही मन में ऐसा है कि हाँ आप मुझे नहीं प्रकट कर पाओगे, मुझे नहीं पकड़ सकते अपनी इस ड्राइंग में। So I lamented the fact that I never got too close. I was close enough with standing right next to Prabhupada on different occasions. And in my mind, I was trying to talk to Prabhupada mentally. तो मुझे ये बात मन में लगती थी कि मैं कभी भी प्रभुपाद जी के साथ इतना नजदीक संग प्राप्त नहीं कर पाता जैसे कि बाकी भक्तगण सन्यासी गण रहते हैं उनके साथ समीप में, उनके नजदीक। So as Prabhupada was talking, it became very clear that he was going to do something amazing. Something amazing is about to take place. I could feel it coming. तो ऐसे अद्भुत अद्भुत चीजें मैंने देखी जो प्रभुपाद जी से आती हैं। So I never got close. So I started to go up on the chair to get over the heads of everybody, because everybody's packed around Prabhupada. तो मैंने सोचा कि चलो अब मुझे भी कभी प्रभुपाद जी का संग प्राप्त हो, लेकिन सभी भक्तगणों ने पूरा एकदम पैक कर रखा है प्रभुपाद जी के समीप जाने के लिए। Just I was thinking I can't get very close. All of a sudden, like Moses parting the Red Sea, it was Prabhupada coming at me very fast, walking right next to me. मैं देख रहा हूँ कि एकदम से बीच में से रास्ता बनता प्रभुपाद जी मेरे समीप आते हुए आ रहे हैं। So I got eye-to-eye contact with Prabhupada. Now this happened to many devotees. It happened on a regular kind of. Anybody fortunate enough to get that mercy was never ready to forget it. That came, a lot of mercy came. तो मेरा आंखों से आंखों का संपर्क शिला प्रभुपाद का, तो ऐसे बहुत सारे भक्तों के साथ ऐसा अनुभव हुआ है कि शिला प्रभुपाद का उनके आंखों से आंखों में ऐसे देख पाना। Just in a matter of a few seconds, it takes Prabhupada to walk right straight through the crowd and past me. तो ऐसा बहुत ही कुछ क्षण भर के लिए था जैसे प्रभुपाद आए हैं और मेरी आंखों में आंखें देख के जा रहे हैं। So another amazing bit of Prabhupada, when he looked at me in the eyes, I could feel a complete complete cleanse. Instantly. और मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि जैसे ही प्रभुपाद ने मुझे देखा है और एकदम से मेरा पूरा शुद्धिकरण हो गया है। And this happened more than once with a lot of different people. A lot of devotees got the mercy. It's called the introductory offer. Prabhupada was giving it to make sure you understand this status, this Supreme Personality God has a direct associate. और ऐसा जो है काफी भक्तों के साथ अनुभव हुआ है कि जब उनको प्रभुपाद जी की नजर मात्र से, सिर्फ एक दृष्टि मात्र से, देखने मात्र से शुद्धिकरण महसूस हुआ हो, उनकी शिला प्रभुपाद जी की कृपा महसूस हुई। So on this morning walk, we came late in the car and we saw Prabhupada was leading the group and they were walking already in the park. तो जो मैं पहले बताना चाह रहा था कहानी वो अब बता रहा हूँ कि जब हम गाड़ी लेट आ रहा था प्रभुपाद जी वो लॉस एंजलिस के पार्क में जब सैर कर रहे थे सुबह के समय मॉर्निंग। Prabhupada looked up all the time. He was never watching where he was walking. Everybody else was walking with their head down. Prabhupada walked with his head up. You've seen pictures of it. Prabhupada always had his head up. तो प्रभुपाद जो है हमेशा सर ऊंचा करके चलते थे, बाकी सब भक्त नीचे मुंह करके चल रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद जी सर ऊपर करके चलते थे हमेशा। But from my angle of vision, I looked at Prabhupada walking in front of the whole crowd. The morning walk, there was a lot of devotees joined Prabhupada on the morning walk. They were walking with their head down, and Prabhupada was walking with his head up. तो मैं देख रहा हूँ ये दृश्य कि सब लोग भक्त चल रहे हैं और प्रभुपाद जी जो है वो सर ऊंचा करके चलते जा रहे हैं और इतने सारे भक्तगण जो उनके साथ जुड़े हैं वो सुबह की सैर के लिए वो सर नीचे करते हुए चलते जा रहे हैं। I rubbed my eyes and I couldn't believe what I was seeing. I saw Prabhupada walking, but he wasn't touching the ground. तो मैं अपनी आंखों पे विश्वास नहीं कर पाया कि प्रभुपाद चल रहे हैं लेकिन उनके जो चरण हैं, चरण कमल वो जमीन को छू नहीं रहे हैं। So this happened different occasions. People were seeing Prabhupada walking on the beach in Bombay. He left footprints, and there were no footprints. तो ऐसा और भी अवसर हुए हैं जब ऐसा किसी भक्तों ने देखा है, जैसे कि मुंबई के अंदर जब बीच पे चल रहे हैं तो प्रभुपाद जी जैसे कुछ समुद्र पे चल रहे हो, कभी कहीं पर फुटप्रिंट हैं, कहीं पे उनके चरणों के चिन्ह हैं, कहीं पे नहीं है।
Maybe the reason why he always looked up, because he didn't have to see where his feet were going. He always looked up because he wasn't concerned about what he was walking on. Because his feet wasn't touching the ground. तो उनके चरण जो है वे जमीन पे नहीं छू रहे थे, ऐसा दृश्य देखा मैंने, इसीलिए ऊपर देख रहे थे. One time I was at Chippiwala, the place where Prabhupada wrote from his position in Delhi. He had a room in Chippiwala temple. तो चिपीवाला मंदिर, दिल्ली में जो चिपीवाला स्थान है जहाँ पे प्रभुपाद जी रहे थे, ये उस स्थान की बात है. That's one of the first devotees to go to that place to see where Prabhupada was preaching from. तो ये वही स्थान है जहाँ से श्रीला प्रभुपाद ने प्रचार जो सेवा किया करते थे, चिपीवाला दिल्ली. So I was up on the roof making a drawing of Prabhupada looking out across the Jama Mosque, which is the Muslim mosque, the biggest one in the world, across the street. तो प्रभुपाद जी जो है वे खड़े हुए थे बालकनी में, और वहाँ पर जो स्थान है वहाँ पे बहुत बड़ी मस्जिद है, जामा मस्जिद, उस स्थान की तरफ दिल्ली में वहाँ पे बालकनी से खड़े हुए हैं, और वही स्थान बालकनी से नजर आ रहा है वे मस्जिद. I'm making a drawing. While I'm making a drawing, this little old lady come hobbling up next to me and asked me what I was doing. तो ये मैं उस समय भी प्रभुपाद जी की ड्राइंग बनाना चाह रहा था कि कैसे प्रभुपाद जी का दृश्य रहा होगा जब प्रभुपाद जी बालकनी से खड़े होकर मस्जिद की तरफ देख रहे होंगे. So I explained to her that she's a Prabhupada, my spiritual master, and I'm trying to make a drawing to show where he looked when he saw when he walked off the roof of this building, the Jama Mosque. तो एक स्त्री, एक माता जी आकर मुझसे पूछती हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं. तो मैं उनको बताता हूँ कि मैं अपने गुरु महाराज श्रीला प्रभुपाद जी का चित्र बनाने की कोशिश कर रहा हूँ. So I had a couple back to Godheads, and I gave the Godhead to this lady. She was curious about what happened to Prabhupada. तो मेरे पास कुछ पत्रिकाएं थी भगवत दर्शन, बैक टू गॉडेड मैगजीन्स की. तो मैंने उन माता जी को दी वो एक कुछ पत्रिका पढ़ने के लिए, क्योंकि वे जानना चाहती थी कि प्रभुपाद कहाँ है, क्या हुआ, कैसे रहा. She was living there at the time that Prabhupada was taking his time writing the books. The Bhagavatam was being written in that room. तो ये कमरा वही है जहाँ पे प्रभुपाद जो भागवतम लिखते थे, और वो माता जी तब उनको जानते थे उस समय पर जब पाश्चात्य जगत जाने से पहले. So she told me sometimes Prabhupada working right through the night, writing and doing Bhagavatam. तो ये वही स्थान है जहाँ पे प्रभुपाद जी जब रात्रि के समय पे भी लिखा करते थे भागवतम. And he told that lady who was up on the roof, had her apartment, building on top of the roof, where she lived. तो ये जो स्थान वही है जहाँ पर, और वो ऊपर की तरफ स्त्री जो माता जी जिनकी मैं बात बता रहा हूँ वो रहती थी. So she said that Prabhupada told her, "This what I'm writing now is going to go all over the world. It's just a question of time." तो वो माता जी ने बताया मेरे को कि शिला प्रभुपाद जब भागवतम का वहाँ पर जब लिखते थे तो वो मुझे बताते थे कि ये भागवतम जो मैं लिख रहा हूँ इस समय पर, ये पूरे विश्व भर में जाएगी. This is about a year after Prabhupada left, so it was just a memory at that time. तो ये एक साल बाद की बात है जब शिला प्रभुपाद 1977 में शरीर छोड़ चुके थे. One more story. तो एक और कहानी आखिरी आपको सुनाएंगे. So when she opened up the Bhakti Garden and saw Prabhupada, I told her there's so many devotees now. Prabhupada made it famous trips around the world. तो जब वे माता जी ने वो खोली भगवत दर्शन की पत्रिका, तो उसमें देखकर बड़ी आश्चर्य हुई कि हाँ प्रभुपाद ने तो कितने सारे भक्त बना दिए. One class in Los Angeles, New Dwarka, Prabhupada made a statement. He was asked if we're all going back home, back to Godhead. तो लॉस एंजलिस में न्यू द्वारका मंदिर में प्रभुपाद जी ने एक बार एक कथन कहा, एक स्टेटमेंट कहा कि हम सभी लोग जो है सभी भक्तगण भगवत धाम वापस जा रहे हैं. Prabhupada says yes, everybody's going back. प्रभुपाद ने कहा हाँ हम सब जाएंगे, हम भगवत धाम जाएंगे. I got the key to the back door. I can open up for everybody. मेरे पास जो है पिछले दरवाजे की चाबी है और मैं सभी के लिए खोल सकता हूँ.
Srila Prabhupada ki jai. Srila Prabhupada ki jai. It means everybody that's in contact with the philosophy with Prabhupada is going back home, back to Godhead. Everybody right here too. तो सभी के पास सभी भक्तगण जो यहाँ पे मौजूद हैं, जो हमें ऑनलाइन देख पा रहे हैं, तो वो सभी भक्तगण श्रीला प्रभुपाद जी के साथ संपर्क में हैं, उनकी इस फिलॉसफी सिद्धांत के साथ। Welcome to the spiritual world. Srila Prabhupada ki jai. आप सभी का आध्यात्मिक जगत में स्वागत है। श्रीला प्रभुपाद की जय। Don't have to worry about going back home, back to Godhead. You're already there. आप सबको चिंता करने की जरूरत नहीं है भगवत धाम जाएंगे कि नहीं, आप वहीं पर ही हैं। All of you are already back to home, back to Godhead. आप सभी पहले से ही भगवत धाम जा चुके हैं। Srila Prabhupada ki jai. श्रीला प्रभुपाद की जय। That's it. Any questions? Any questions? किसी का कोई कोई प्रश्न? प्रश्न है क्या? किसी का कोई प्रश्न है प्रभु जी से? You got slides you want to show about the book? Okay, go ahead now. Okay. तो ये प्रभु जी की कुछ पुस्तक में से कुछ सुंदर चित्र हैं। There are some beautiful pictures from the book of from Bhaktisidhanta Prabhu. So these books are available online on Amazon, Kindle edition at a very nominal price. तो प्रभु जी की जो पुस्तक है बहुत ही नॉमिनल, बहुत ही कम मात्रा में सिर्फ भक्तों को पढ़ने के लिए उपलब्ध है। किंडल एडिशन ऑनलाइन अमेजन में आप सर्च कर सकते हैं। अल्फ्रेड जे वलेरियो प्रभु जी का लीगल नेम है और भक्ति सिद्धांत दास दीक्षित नाम है। यू कैन फाइंड भक्ति सिद्धांत प्रभु बुक्स ऑनलाइन, maybe in his legal name Alfred J. Valerio, or Bhaktisidhanta Das is initiated name. It's available on Amazon at a very nominal price. One last talk is that we're making a museum in LA where the old temple room was. एक बार ये मैं बता रहा था बस कि इतने से ही इसे विराम दूंगा इस बात पर कहकर कि लॉस एंजलिस में जब मैं म्यूजियम बना रहा था, So I have to be banging on the wall to do some work to make sure that this next diagram will fit properly. Banging on the wall. तो जो दीवार पर जो आप डायरोमास देखते हैं, जो भगवान के भक्तों के सुंदर चित्र बने होते हैं, तो मैं वो देख रहा था कि ये सही पूरा तरीके से बैठेगा कि नहीं बैठेगा। Somebody started banging back. तो The other side of the wall, someone was knocking on the wall. तो मैं जब कर रहा था तो मुझे लगा कि मैं जब ठोक रहा हूँ तो वापस मेरी तरफ कुछ जोर से कोई चीज आ रही है। So I knocked again. तो मैंने ऐसा किया। The other side of the wall. Prabhupada knocking back. तो ऐसा किया तो जैसे प्रभुपाद जी दीवार से सामने से ऐसे ऐसे वापस कर रहे हैं। Well, Prabhupada had a great sense of humor. I hope I could convey that to everybody. प्रभुपाद जी का बहुत ही सुंदर हास्य स्वभाव था। आशा करता हूँ शायद मैं थोड़ा बहुत उसका कुछ आप लोगों के ऊपर झलका पाया। Srila Prabhupada ki jai. प्रभुपाद की जय। We only got a half hour, so my time is up. तो मेरे पास आधा घंटा था, मेरा समय समाप्त हुआ। Now you're going to hear from Harikesa. अब आप हरि सॉरी प्रभु से सुनने का अवसर प्राप्त करेंगे। I have more association with Prabhupada than anybody. उनके पास प्रभुपाद की बहुत सारी पुस्तक, बहुत सारी कहानी है, सबसे ज्यादा उन्हीं के पास है। हरि सॉरी प्रभु। Okay. Thank you very much, Prabhu. So we'll thank Prabhuji by chanting Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Prabhuji, next time we will be expecting more time from you. So we are requesting next time more time from you. I got a lot of stories. Yes. Okay. So now we are going to hear from His Grace Hari Shauri Prabhu. Everybody know about Hari Shauri Prabhu, and he is speaking on the Transcendental Diary, which has been written by himself. So I'll speak about him a few words. Hari Shauri Prabhu was born in England on November 17, 1950. In May 1971, he immigrated to Australia, where on the second day of his arrival, he met the members of the newly emerging Krishna consciousness movement. He was duly accepted as an initiated disciple by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada on April 9, 1972 in Sydney. In August 1975,
he moved to the newly opened ISKCON Krishna Balarama temple in Vrindavan, UP, India, where he served as temple commander. In November of the same year, he joined A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada's personal entourage, remaining as his divine grace servant for 16 months in March of 1977. Srila Prabhupada appointed him ISKCON's governing body commissioner for Australia, New Zealand and Indonesia, a service he performed for over 7 years. During that period, he oversaw the growth of ISKCON society in the South Seas from 4 temples and ashramas to 17, including 4 farming communities, 2 schools and several restaurants. He was also instrumental in establishing branches of the Bhaktivedanta Book Trust in Australia and Indonesia. In 1986, he began the work of transforming the diary he kept while traveling with Srila Prabhupada into a book, or rather a series of books. In 1990, he moved to America and worked as publisher for Back to Godhead magazine, the Krishna Consciousness Movement spiritual periodical. For a year, he lives at ISKCON World Headquarters in Mayapur, West Bengal, India, near Kolkata, with his wife and daughter, where he continues to publish his memories of being with Srila Prabhupada. He is currently the director of Bhaktivedanta Research Center in Kolkata and academic resources of Gaudiya Vaishnavism, an archive library of ancient Vaishnava texts. These ancient texts are being both digitized and preserved in the original state. So, हरिशौनी प्रभु ऐसे इंग्लैंड में उनका जन्म हुआ, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट कर दिए हैं। उसके बाद में 1971 में कृष्णा कॉन्शियस डिवोटीज के साथ में आलाप मिलना हुआ है और 1 साल के बाद में सिडनी में प्रभुपाद जी के पास में दीक्षा लिए हैं। उसके बाद टेम्पल कमांडर के जैसा इस्कॉन वृंदावन में कुछ दिन सेवा किए हैं और प्रभुपाद जी उनको जीबीसी बना दिए हैं। कौन से न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया। तो 7 साल में वो 4 मंदिर से 17 मंदिर और 4 फार्मिंग कम्युनिटीज और 2 स्कूल बना दिए हैं। उसके बाद में वो अभी जो बुक्स है गौड़िया वैष्णविज्म का, उनके वो हेड है भक्तिवेदांता रिसर्च सेंटर, ये कलकत्ता में है और वो बुक्स को पूरा डिजिटल वे में लिखकर उसको सुरक्षित रखा जा रहा है, वहाँ के वो हेड है। तो हम प्रभु जी को स्वागत करेंगे हरिध्वनि और उलूध्वनि बोलकर। सो वी वेलकम टू प्रभु जी बाय चैंटिंग हरिध्वनि एंड उलूध्वनि। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। Namaram Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Iti Namade Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharane Nirvisesha Shunyavadi Paschachadis Tarani Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. So, I'd like to thank you all for coming. मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा, आप सभी यहाँ आए। It's always nice to be able to spread the glories
of His Divine Grace, Srila Prabhupada. ये हमेशा ही अच्छा अवसर होता है कि श्रीला प्रभुपाद, हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिसिद्धांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी का गुणगान फैलाना। We were fortunate enough to have Prabhupada's association for 11 years. तो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि यहाँ में सौभाग्य प्राप्त हुआ हम श्रीला प्रभुपाद का 11 साल तक असंग प्राप्त कर पाए। It's not a very long time, ये बहुत ज्यादा समय नहीं है, but in that short period that Prabhupada was traversing the earth, तो ये amazing things happened. तो ये इतने से कम समय में 11 साल के अंदर प्रभुपाद जी ने पृथ्वी का भ्रमण किया और बहुत अद्भुत अद्भुत कार्य किए। As time goes by, I sometimes, as everybody does, reflect on what Srila Prabhupada actually did. तो जैसे जैसे समय निकलता चला जाता है तो हम सब जो है वो पलट कर देखते हैं समय की ओर, पिछले समय की ओर कि क्या किया ये प्रभुपाद ने। And it's frankly astounding. तो ये अगर स्पष्ट कहा जाए सरल भाषा में तो बहुत ही अद्भुत है। I have a diary that I was keeping when I was traveling with Prabhupada. मैं एक डायरी रखता था अपने साथ जब मैं श्रीला प्रभुपाद जी के साथ भ्रमण किया करता था। That's been published so far in 5 parts. तो ये अभी तक जो है वो 5 भागों में पब्लिश हो चुकी है। Transcendental Diary. ट्रांसेंडेंटल डायरी के नाम से। And in each of the 5 volumes, I have a foreword from professors in different universities. तो हर 5 जो भाग हैं, वॉल्यूम्स हैं उस ट्रांसेंडेंटल डायरी के, तो उसमें जो शुरुआती पन्नों में जो फॉरवर्ड होता है तो वहाँ पर मेरे को काफ़ी सारे प्रोफेसर्स जो कॉलेज और अलग अलग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने उसमें लिखा हुआ है। So one of those professors is a good friend of the devotees. तो उनमें से एक प्रोफेसर जो हैं वो भक्तों के अच्छे मित्र हैं। He made the remark उन्होंने एक रिमार्क, एक कथन लिखा that Srila Prabhupada was more potent and powerful, and what he achieved was so far in excess of other spiritual leaders. तो उन्होंने एक रिमार्क लिखा कि श्रीला प्रभुपाद बाकी जो लीडर्स होते हैं, जो बाकी लीडर्स हैं उनसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं क्योंकि उन्होंने इतना कुछ कर दिखाया। That nobody can be compared to him. Buddha, Jesus, anybody. तो उनसे किसी की भी तुलना नहीं की जा सकती, चाहे बुद्ध हो, जीसस हो, कोई भी उनकी तुलना किसी से नहीं की जा पाएगी। What Prabhupada did was astounding. तो जो प्रभुपाद ने किया वो बहुत ही अचंभित चीज है। To set up a movement worldwide with a huge following, dedicated, completely giving up everything of their own selfish desires just to serve him. ऐसी अंतरराष्ट्रीय संस्था बनाना जिसमें पूरे विश्व भर से भक्तों को एकत्रित करना और बिना किसी इच्छा के, सभी इच्छा रहित होकर श्रीला प्रभुपाद जी की सेवा में लगे। To simultaneously create a book trust. साथ साथ एक बुक ट्रस्ट, पुस्तक का जो ट्रस्ट है वो भी बनाया। Which so far I think over 500 million copies have been distributed. अभी तक हमने 500 मिलियन, 500 मतलब 5000 लाख पुस्तकें वितरण कर चुके हैं। It's truly astounding. ये बहुत ही ज्यादा एकदम सत्य, बिल्कुल अद्भुत है ये तो। To have
established 108 temples 108 during his lifetime. 108 मंदिरों का निर्माण करना अपने जीवन काल में. And now they say, I don't know how accurate this is, but they say that there's about 800 ISKCON centers around the world. और अब कहा जाता है कि 800 से अधिक मंदिर हैं पूरे दुनिया भर में इस्कॉन के. It's inconceivable. ये तो अचिंत्य बात है. School system, Gurukul. स्कूल का सिस्टम देखिए, गुरुकुल का. A social system, Varnashram. वर्ण आश्रम का जो ये सिस्टम है वो देखिए. The scope of that Prabhupada was working on is inconceivable. तो जो ये क्रियाएं हैं श्रीला प्रभुपाद की, ये अचिंत्य हैं समझने में. And that when you met, I mean, if you heard about all the different things, all the aspects that Prabhupada did, and you try to think of some comparison, there is none. तो अगर आप जो भी क्रियाएं श्रीला प्रभुपाद ने किए हैं, अगर आप उनकी तुलना करना चाहेंगे भी, तो क्या तुलना करेंगे? Not within the realms of Gaudiya Vaishnavism, nor within the realms of religiosity around the world. गौड़ीय जो वैष्णविज्म के भी आप अंतर्गत भी तुलना करके देख लीजिए, या फिर और भी विश्व भर के धर्म के हिसाब से तुलना करके देखिए. So where somehow or another we find ourselves in the firmament of Srila Prabhupada's activities. तो ये सब कुछ जो है, अब इसको अगर चित्रित करके देखेंगे तो ये पूरा श्रीला प्रभुपाद जी का सारा विश्व भर में करा हुआ क्रियाएं हैं. We can go anywhere in the world. There's some devotees, there's some center, there's some restaurant that you can tap into immediately. तो आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, वहां पर आपको कोई ना कोई भक्त मिल जाएगा, कोई ना कोई हमारा रेस्टोरेंट मिल जाएगा, और आप अंदर जाइए. The Prabhupada told us, as long as you follow what I ask, what I recommend, then you'll be successful. श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि जब तक आप मेरी बात, कही हुई बात मानेंगे, जब तक आप उसको प्रशिक्षण, उसको फॉलो करेंगे, उसका अनुसरण करेंगे, तब तक आपको कामयाबी मिलती ही रहेगी. This is just the beginning. ये तो सिर्फ अभी शुरुआत है. Prabhupada, when you read his books, he's talking about a reformation of the entire world. जब आप प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ते हैं तो उसमें आपको पूरे जगत का बदलता हुआ ये बदलीकरण नजर आता है. He had that conviction. उनके अंदर, श्रीला प्रभुपाद के अंदर वे दृढ़ता है that the whole world can be transformed कि पूरी दुनिया बदल सकती है by this Krishna consciousness movement. इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन के द्वारा. Think big. बड़ा सोचिए. Prabhupada sometimes said that my disease is that I cannot think small. श्रीला प्रभुपाद कभी कहा करते थे कि मेरी एक ये बीमारी है कि मैं छोटा सोच ही नहीं सकता. At the same time, sometimes he would say, people would ask him, what miracle have you performed? तो कभी कभी प्रभुपाद को पूछते थे कि आप क्या चमत्कार करते हैं. And Prabhupada would say, I have no miracles. तो प्रभुपाद कहते हैं मेरे पास कोई चमत्कार नहीं है. This is my miracle. ये मेरे चमत्कार हैं. And he would point to his brahmacharis, brahmacharinis, shaved heads, seeker, tilak. तो वो He would say, this is my
miracle. तो वो अपने ब्रह्मचारियों की तरफ, ब्रह्मचारिणियों की तरफ इशारा करते हुए, इनके सर मुंडे हुए उनको दिखाकर कहते थे, ये सब मेरा चमत्कार है। And what is it? It's a simple thing. और क्या है ये तो छोटी सी बात है। To understand the absolute truth as it is. परम सत्य को वैसा का वैसा ही समझना। When you read Prabhupada's books, again and again and again, he's reinforcing the understanding, what? That we're not this body. तो आप प्रभुपाद जी की पुस्तक बार बार पढ़िए तो आप देखेंगे कि वे एक बात को केंद्रित कर रहे हैं कि हम ये शरीर नहीं है। It's a simple thing. ये सरल सी बात है समझने के लिए, Apparently. एक तरह से बाहरी दृष्टिकोण से। But the whole world is going on under an illusion that they are the body. पूरा दुनिया, पूरा संसार इसी भ्रम में है कि मैं ये शरीर हूँ। If you can just understand that one thing, that we're not this body, the whole world will change. अगर इतनी छोटी सी बात हम समझ जाएं पूरी दुनिया में कि ये मैं शरीर नहीं हूँ, तो पूरा दुनिया, पूरा संसार बदल जाएगा। Sometimes certain personalities, they complain. Prabhupada's just saying the same thing again and again. You're not this body. कभी कभी कई लोग इस बात की कंप्लेंट करते हैं, इस बात के बारे में नाराज होते हैं कि प्रभुपाद तो बार बार एक ही बात बताते हैं कि हम शरीर नहीं हैं। Where's the nectar? अमृत कहाँ है? Where's the ecstasy? आनंद कहाँ है? We want to see something more. हम कुछ और ज्यादा देखना चाहते हैं। But without understanding that you're not this body, you'll never understand anything else. जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि मैं शरीर नहीं हूँ, तब तक आप इसके अलावा कुछ और समझ भी नहीं पाएंगे। This has been the forefront of all of Srila Prabhupada's preaching and activities. तो आप देखेंगे श्रीला प्रभुपाद जी की प्रचार वाली क्रियाएं, That we're not this body. कि हम ये शरीर नहीं हैं। And when you understand that, you transform automatically. और जब आप ये बात समझ जाते हैं तो आपका बदलाव अपने आप होना शुरू हो जाता है। To know the difference between spirit and matter. तो आप ये आत्मा और शरीर का भेद जान पाते हैं। And therefore Prabhupada's building this Temple of the Vedic Planetarium. इसीलिए प्रभुपाद ये टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटरियम का निर्माण कर रहे हैं। This is Prabhupada's statement to the world. ये प्रभुपाद जी का एक स्टेटमेंट है पूरे संसार को। What is that statement? ये कौन सा स्टेटमेंट है वो? Life comes from life. लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, जीवन से जीवन आता है। Prabhupada in 1975-76, he was here in Mayapur. 1975, 1976, 1975-76 में श्रीला प्रभुपाद मायापुर में थे। He spoke a lot about this Temple of the Vedic Planetarium. उन्होंने बहुत कुछ बात किया इस बड़े मंदिर टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटरियम TOVP के बारे में। He wanted something big. वो चाहते थे कि कुछ बड़ा होना चाहिए। It started off in 1972 with Prabhupada drawing up plans for his Mayapur center. तो 1972 में 1972 में शुरुआत हुई जब प्रभुपाद जी कुछ चित्र बनाना चाह रहे थे कि क्या होना चाहिए मायापुर में। He had dispatched Tamal Krishna Goswami from Calcutta to come here to Mayapur to buy some land for his ISKCON. तो उन्होंने तमाल कृष्ण महाराज को कलकत्ता से मायापुर भेजा कि यहाँ पर आकर कुछ जमीन लें ISKCON के लिए। And as soon as that task was accomplished, और जैसे ही ये काम पूरा हुआ, then Prabhupada immediately moved on to the land. They bought some land, small amount, 1 biga. तो उन्होंने जैसे ही कुछ जमीन का हुआ तो 1 बीघा जमीन लिया। Javed Ali Sheikh
was a local Muslim जब landholder. जवाली शेख जो कि लोकल मुस्लिम मालिक थे उस जमीन के, So he was a very nice man. बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। He sold one small piece of land उन्होंने एक छोटा टुकड़ा जमीन का बेचा without realizing that that one bigger of land is going to transform. और ये बात उनको महसूस नहीं हुई उस समय पे कि एक बीघा जमीन इतना विस्तार कर जाएगी। In like a needle, out like a plow. जमीन का उसको क्या कहते हैं? हल चलाते हुए, हल चलाना, सुई की तरह जाना और हल की तरह निकलना। He had a small grass hut. उनके पास छोटी सी घास की कुटिया थी। And that transformed into what we're seeing coming up now. और उस छोटी सी घास की कुटिया से क्या निकल कर आया आप लोग देख सकते हैं। As soon as Prabhupada got that land, he then had plans drawn up for a big temple. तो जैसे ही जमीन लिया था तो उसमें पौधे उगाना शुरू किया बड़े मंदिर के लिए। So that परियोजना कर रहे थे। प्लान ओके, सो जैसे ही जमीन का टुकड़ा लिया तो वो योजना बनाने लग गए कि बड़े मंदिर कैसे बनाएंगे। there's some photos of the first iteration of the Mayapur center. तो उस समय पे कुछ ऐसे हमारे चित्र हैं कि पहले मायापुर शुरुआत के समय में कैसा लगता था। So there were 4 buildings at the back of the land. तो जमीन के पिछले हिस्से में 4 बिल्डिंग थी। And then there was a temple at the front on the roadside, which would be 100 feet high. तो रोड के उस तरफ एक मंदिर था जो कि 100 फुट ऊंचा था। So Prabhupada immediately started this campaign to build the Mayapur center. तो तुरंत शिला प्रभुपाद ने सोचा कि मायापुर के सेंटर को विकसित करने के बारे में। One of those 4 buildings was the Lotus building. तो उनमें से 4 में से एक जो इमारत बिल्डिंग थी वो लोटस बिल्डिंग थी। So as soon as that was built, Prabhupada installed Radha Madhav. तो जैसे ही वो बिल्डिंग का निर्माण, उस इमारत का निर्माण हुआ लोटस बिल्डिंग का, तो राधा माधव के विग्रहों का स्थापना किया गया। At that time, the ground floor was where the deities were kept. उस समय पे जो है वो ग्राउंड फ्लोर हुआ करता था जहाँ पे विग्रह को रखा था। So some local Vaishnavas complained. तो कुछ जो लोकल उस समय पे वैष्णव थे उन्होंने जो है वो चिंता जताया, कंप्लेन किया। Well, you're putting the deity underneath. Everybody's walking over their heads. तो आपने तो ग्राउंड फ्लोर पे नीचे रखा है और ऊपर से जो है उनके छत से तो सब लोग चलकर जाते हैं। So Prabhupada's reply was that these deities, they're calling for their devotees to come. तो शिला प्रभुपाद उत्तर देते थे कि ये जो विग्रह हैं वे अपने भक्तों को बुला रहे हैं कि आप आइए आइए। They want to glorify their devotees. वे अपने भक्तों का गुणगान करना चाहते हैं। So he said, actually, this is more important to worship the devotees than even Krishna himself, according to Krishna. तो वो कहते हैं कि कृष्ण के अनुसार कृष्ण के भक्तों की पूजा अर्चना करना ज्यादा महत्वपूर्ण है कृष्ण से। So Prabhupada was quite happy to have Radha Madhav there on the ground floor where more people could come and see them. तो प्रभुपाद प्रसन्न थे कि राधा माधव जो है वो ग्राउंड फ्लोर पर हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा भक्तगण उनके दर्शन करने के लिए आ सके। So 74
that was inaugurated, that Lotus building. तो 1974 1974 में वो लोटस इमारत लोटस बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ. By that time, Prabhupada had expanded his ideas. तो उस समय तक प्रभुपाद ने फिर उसके बाद अपने विचारों का विस्तार किया. By 1975, then he had the front gate. 1975 तक उन्होंने जो ये आगे के जो फ्रंट जो द्वार हैं गेट हैं उनका निर्माण किया. Big kitchen, as we used to call it. बड़ी रसोई घर जिसको सुलभ किचन के नाम से जानते हैं. And Prabhupada had increased his idea. Now he was talking about a temple that would be 200 feet high. तो अब वो उस ऐसे मंदिर की बात कर रहे हैं जो कि 200 फुट ऊंचा होगा. By 1977, there was a model of a proposal done by Sarabi Maharaj that was 450 feet high. 1977 तक जाके 108 महाराज उन्होंने जो मॉडल बनाया इस मंदिर का के लिए वो 450 फुट ऊंचा था. Because we trimmed it down a little bit since then. It's been trimmed down a little bit. थोड़ा सा वो झड़ गया है, ट्रिम हो गया है. I think what we've got now is 350 feet. अब जो मुझे लगता है वो शायद 353 फुट है. If you go in and see what it is, it's amazing. कितना अद्भुत है देखिए. Temple of the Vedic Planetarium. टेम्पल ऑफ द वैदिक प्लैनेटरियम. So we are currently in the heart of the Krishna consciousness movement here in Mayapur. अभी हम कृष्ण भावनामृत आंदोलन के हृदय में हैं, मायापुर में. This is the place of Chaitanya Mahaprabhu. ये श्री चैतन्य महाप्रभु का स्थान है. From this place, Krishna consciousness will manifest all around the world. इसी स्थान से कृष्ण भावनामृत पूरे जगत में प्रचलित हुआ. Led by the Senapati Bhakta. और जिसको लीड किया सेनापति भक्त ने. Out of all the Vaishnavas on the planet, we've had the good fortune to meet with that one singular person who has done something that will not be repeated again. तो जितने भी वैष्णव गण हैं संसार में उनको ये अवसर प्राप्त हुआ कि वो एक सेनापति भक्त से मिल सके. ऐसा भक्त जिसने जो कर दिखाया वो हम दोबारा होता हुआ नहीं देख सकते. When you're the first to do something, जब आप पहले ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसने वो कर दिखाया, nobody else can surpass that. आप उस दूसरा कोई व्यक्ति उसको पार नहीं कर सकता. Srila Prabhupada was not taking any credit for himself, of course. श्रीला प्रभुपाद इस जो भी ये कार्य थे उनका श्रेय खुद के लिए कभी नहीं ले रहे. But he was allowing his Guru Maharaj, Srila Bhaktisidhanta Saraswati Thakur, to work through him to establish this worldwide movement. तो वो शिला अपने गुरु महाराज शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को श्रेय दे रहे हैं कि उनके माध्यम से ये सब कुछ हो पा रहा है. There were one or two devotees that were made during the 1930s, 1940s. एक दो भक्त थे जिन्होंने 1930 1940 में कुछ किया था. I was just looking the other day at this display that we've been putting up of the Bhaktisidhanta Research Center. तो भक्ति वेदांता रिसर्च सेंटर के बारे में बताना चाह रहे हैं. So there's some photos there. There's a list of about 5 or 6 devotees from London and Europe. तो भक्ति वेदांता रिसर्च सेंटर में वहाँ पे 5 या 6 भक्तों का उल्लेख है लंदन यूरोप से. So they established something
There's one lady, Vinodvani. She donated a house in London to the Gaudiya mission. तो उनमें से एक स्त्री हैं लेडी जिन्होंने लंदन के अंदर गौड़ीय वैष्णविज्म उनके लिए एक स्थान दिया दान में. Mrs. Botel. Mrs. Botel. Mrs. Botel. So she got initiated, but what was the result of that initiation? उनका दीक्षा हुआ था, तो उस दीक्षा का क्या परिणाम हुआ? When Prabhupada's disciples went there in the 1970s, they went to visit Mrs. Botel. तो श्रीला प्रभुपाद जी के शिष्य 1970 में मिसेस बॉटल के पास गए. But she didn't want to know them. She didn't want to know them. तो वो उनको जानना नहीं चाहती थी. Yeah. No cooperation. उनको कोई सहयोग नहीं कर रही थी. So there were some stunted fruits. कुछ खट्टे. I'm not saying that in a derogatory way, but Prabhupada used that as a Bengali saying, stunted jackfruit. Stunted. खराब कटहल. It doesn't grow. It looks like it's Okay. got some substance, but when you open it, there's nothing in it. तो बड़ा सा दिखता है, ऐसा लगता है कि ठीक है, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह उगा नहीं है. They try to do something, but stunted jackfruits, it doesn't grow, it doesn't ripen. तो कुछ करने का प्रयास किया है, दिखने में बड़ा है, स्टंकी जैकफ्रूट, और लेकिन अंदर से पूरी तरीके से विकसित नहीं हो पाया है. But Srila Prabhupada, as soon as he began his work in the West, according to his spiritual master's desire, amazing things began to happen. लेकिन जब श्रीला प्रभुपाद ने अपने गुरु महाराज की इच्छा के अनुसार कुछ करने का प्रयास किया, तो कितनी अद्भुत अद्भुत कार्य होने लगे. Not an easy thing ये कोई आसान काम नहीं है. to arrive in a big city like New York, ऐसे बड़े शहर न्यूयॉर्क में जाना, to have to live in the most degraded area, the Bowery. इतने खराब स्थान बौरी में रहना. बावरी. Prabhupada was chased out of the apartment that he was sharing with some crazy LSD person. तो प्रभुपाद जी ने कुछ पैम्फलेट्स छपवाए जो कि अपने कुछ वहाँ के लोकल LSD लेने वाले लोगों को जो बताना चाहा. And whatever little possessions that he had, typewriter, couple of pieces of cloth, that was stolen. जो भी कुछ छोटी छोटी चीजें उनके पास थी भी, जैसे कि टाइपराइटर और कुछ कपड़े, वो भी सब कुछ चोरी हो गया. Prabhupada was quite literally destitute. प्रभुपाद कहे एक तरह से कहा जाए तो बिल्कुल खाली हाथ हो गए. Nowhere to live, no money, no friends. रहने की जगह नहीं और कुछ चीजें नहीं, कोई मित्र नहीं. He said in the afternoons I would go on the bus. तो कहते थे कि मैं दोपहर के समय बस में चला जाता था. I had no idea where it was going, but I would go on the buses and just to see the destination. तो मुझे नहीं पता हो, प्रभुपाद जी बता रहे कि मैं निकल जाता था दोपहर के समय बस में. मुझे नहीं पता होता था कि वो बस कहाँ जा रही है. बस में निकल जाता था कि ठीक है, जहाँ भी जा रही है वे स्थान देखता हूँ. I mean, try and place ourselves in that situation, literally living practically on the street. तो आप खुद को अगर उस स्थिति में याद कर सोच कर देखें कि कैसे एकदम जैसे सड़क पर रहने वाली बात हो. And 10 years later, we were in 1976, we were in New York. और 10 साल बाद 1976 में हम न्यूयॉर्क में हैं. The same place where we'd been destitute. और सही वही स्थान जहाँ पर वे एकदम And in निर्दय अवस्था में थे. July of 1976, जुलाई 1,000 devotees are going in kirtan procession down 5th Avenue.
जुलाई 1976 में जुलाई एक मिनट आवाज दे दीजिए। Okay. Yes. So, 1976, July, Prabhupada's going down Fifth Avenue on these huge wrath cars with 1,000 devotees, chanting and dancing in ecstasy all the way down Fifth Avenue, which Prabhupada said is the most important street in the world. 1976 में भक्तगण कीर्तन करते हुए फिफ्थ एवेन्यू, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है, जगह है। So how do you go from being destitute on the pavement to being the conqueror of New York? तो देखिए ये यात्रा कैसे हुई, जहाँ पे वे निर्दय अवस्था में थे, और अब देखिए भक्तगण कीर्तन करते हुए। If that's not a miracle, I don't know what is. If that's not a miracle, then I don't know what is. अगर ये चमत्कार नहीं है तो मुझे नहीं पता कि चमत्कार क्या होता है। So we have to stop at this point. Srila Prabhupada ki. I think now. Thank you. Yes. All right. Hare Krishna. Thank you very much, Prabhu, for the wonderful pastimes. So we thank Prabhu by chanting Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So we have now we have with us His Holiness Bhakti Vighna Vinasa Narasimha Swami Maharaj ki. So Maharaj was initiated by Srila Prabhupada in London 1971. A year later he received the second initiation. He has been preaching for over last 25 years in Asian countries such as India, Philippines, China, Taiwan, Singapore, Hong Kong, Malaysia and Thailand. Through his years of preaching, he has given countless souls practical guidance and deep inspiration. Taking sannyasa in Mayapur in 1994 from His Holiness Tamal Krishna Goswami Maharaj did not mean much of a change in his lifestyle, since Maharaj has always been strict in his sadhana. Whoever gets to know Maharaj admires and respects his sincere and faithful practice of chanting the holy names of the Lord. He truly walks his talk. Maharaj has been teaching with the MI since its inception. So Maharaj ji लंदन में इनका दीक्षा हुआ है पहली बार, और सेकंड इनिशिएशन भी वहीं पर हुआ है। ज़्यादा कुछ नहीं लिखे हैं। सो 25 इयर्स 25 साल तक ये प्रचार किए हैं, जैसे इंडिया, फिलीपाइंस, चाइना, ताइवान, सिंगापुर, हांगकांग, मलेशिया, थाईलैंड। बाद में हिज होलीनेस तमल कृष्ण गोस्वामी महाराज के पास से ये संन्यास दीक्षा ग्रहण किए हैं, और ये दीक्षा संन्यास बनने के बाद में कोई उनके अंदर में कोई फर्क नहीं देखा गया बोल रहे, क्योंकि वो पहले से भी वो सन्यासी जैसे ही रहते थे। उनका साधना, उनका व्यवहार, सब कुछ, और बोलते हैं वो जो बोलते हैं वो करते हैं, वैसे ही रहते हैं वो। वो बहुत यहाँ से एमआई जब से शुरू हुआ तब से महाराज यहाँ पर टीचिंग भी करते हैं। तो हम अभी महाराज के पास में श्रवण करेंगे
महाराज बोलने वाले हैं। यस, मैं जानता हूँ वो सुनने वाले हैं, वो सुनने के लिए बहुत पसंद करते हैं। द टॉपिक इज हियर, हियरिंग। यस, आई नो हिम, ही लाइक्स टू हियर। So we welcome Maharaj by Haridwani and Uludwani. Hari Bol! Hari Bol! Hari Bol! Adhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Giridharadhari Gopi Jana Vallabha Giridharadhari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Nitai Gaur Hari Bo Nitai Gaur Hari Bo Jai Jai Prabhupada 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 Prabhupada
Premanande. Om Jnanatimmarandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurunmilitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimati Bhaktisidhanta Swami Niti Namane. Namaste Saraswati Devi Kauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So as Srinivas Prabhu announced, I'm speaking on the topic that he likes to hear. तो जैसा श्रीनिवास प्रभु ने उद्घोषणा किया, मैं इस विषय पे बोलूँगा कि he likes to hear, वो सुनना पसंद करते हैं. प्रभुपाद जी के बारे में भक्तिसिद्धांत महाराज ने बोला. So this was the words of his Srila Prabhupada's own spiritual master, Srila Bhaktisidhanta Saraswati Prabhupada. तो ये श्रील प्रभुपाद जी के बारे में श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के द्वारा बोला गया कथन था. And he said this at the time when he was giving initiation to our own Srila Prabhupada. और उन्होंने ये तब कहा था जब वो हमारे श्रील प्रभुपाद जी को दीक्षा दे रहे थे. Srila Prabhupada at that time was a resident in Prayagraj, as it's called today. Previously it was called Ahmedabad. Allahabad. तो श्रील प्रभुपाद जी उस समय प्रयागराज में निवास करते थे. आज इसका नाम प्रयागराज है, पहले इसको इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था. So Srila Prabhupada at that time was in family life and he was having a small business. He had opened a chemist business called Prayag Pharmacy where he was selling some of his own medicines which he had produced. तो श्रील प्रभुपाद जी उस समय गृहस्थ आश्रम में थे और उनका छोटा सा व्यवसाय था. उन्होंने एक दवाइयों का जो व्यवसाय है वो प्रारंभ किया था और वो वहाँ पे खुद के द्वारा बनाई गई दवाइयाँ बेचते थे. And the Gaudiya Math people had come to open a center there and they had heard from the people in the town that there was a pious Bengali man there who had the chemist business and they came to meet him. तो गौड़िया मठ के जो भक्तगण हैं वहाँ पे आए थे एक केंद्र खोलने के लिए और उनको वहाँ के स्थानीय लोगों से पता चला कि यहाँ पर एक बहुत ही पवित्र एक बंगाली सज्जन रहते हैं, तो इसीलिए वो लोग इनसे मिलने के लिए आए. This was 1933. तो ये सन 1933 की बात है. The Gaudiya Math, some devotees come there and they met him and they showed the picture of Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada and our own Srila Prabhupada immediately said, oh, I know him. तो गौड़िया मठ के भक्त श्रील प्रभुपाद हमारे श्रील प्रभुपाद जी के पास आए और उन्होंने श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर की एक छवि इनको दिखाई. तो देखते ही श्रील प्रभुपाद जी ने बोला, हाँ मैं तो इनको जानता हूँ. Some 11 years earlier, 1922, Srila Prabhupada at that time was a young man and just recently married, and he was brought there by his friend to meet this sadhu. तो इससे ठीक 11 वर्ष पूर्व श्रील प्रभुपाद जी जो कि एक युवक अवस्था में थे, नई नई उनकी शादी हुई थी और उसी समय उनके एक मित्र थे जो कि इनको लेकर श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिलने के लिए गए थे. And our own Srila Prabhupada describes, he said at that time I was very pessimistic about so-called
sadhu men, about so-called holy men. तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, हमारे अपने श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि उस समय वो बहुत ही निराशा पूर्वक रूप से साधुओं के बारे में विचार रखते थे। We heard this morning from His Holiness Radhanath Swami Maharaj. He was describing we should be pessimistic about the material world. तो आज सुबह हमने प्रवचन में सुना परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी से कि कैसे हमें भौतिक समाज के लिए निराशावादी होना चाहिए। So Srila Prabhupada had those same kind of doubts about holy men and sadhus. तो श्रील प्रभुपाद जी का ऐसा ही विचार था, जो साधु होते थे या जो पुरुष साधु पुरुष पवित्र आत्माएं होती थी। He had seen a lot of corruption, he'd seen a lot of degradation in the name of the practice of spiritual values. तो उन्होंने देखा था कि किस प्रकार से आध्यात्मिक विचारों के मामले में बहुत ही गिरावट आ गई थी। And he was not attracted, he was not much impressed with whatever he had seen. इसी कारण से वो बहुत आकर्षित नहीं होते थे, उनको बहुत अच्छा नहीं लगता था। But at the same time, our own Srila Prabhupada was born in a Vaishnava family. लेकिन हमारे जो अपने श्रील प्रभुपाद जी हैं, उसी समय एक वैष्णव परिवार में उनका जन्म हुआ था। Right? Vegetarian his whole life. पूरे जीवन उन शाकाहारी बिताया। Even Prabhupada tells how one time when he was a young child, he got some fever. प्रभुपाद जी बताते हैं कि कैसे जब वो एक छोटे बच्चे थे तो उनको ज्वर रोग हो गया, फीवर हो गया था। And the doctor came, and doctor told his mother and father, you have to give your child chicken soup. तो डॉक्टर आए और उन्होंने प्रभुपाद जी के माता पिता को बोला कि आपको अपने बच्चे को चिकन सूप, मुर्गे का सूप पिलाना पड़ेगा। And it was a shock to his parents because his parents were strict Vaishnavas. They never cooked any non-veg. और ये उनके माता पिता के लिए बहुत ही गंभीर विषय था, क्योंकि उन्होंने कभी पूरे जीवन किसी भी प्रकार के मांसाहार का सेवन नहीं किया था। But the doctor said, if you don't give your child chicken soup, he will die. पर डॉक्टर ने बहुत तेजी से ऐसा बोला कि अगर आप अपने बेटे को ये मुर्गे का सूप नहीं पिलाएंगे तो ये मर जाएगा। So naturally the parents were very disturbed. They thought, oh, what to do? तो स्वाभाविक है कि कोई भी माता पिता ऐसा डर जाएगा कि क्या करें। So somehow they prepared some chicken soup. तो किसी प्रकार से उन्होंने चिकन सूप बनाया। But as soon as they tried to put a few drops in the mouth of the child, immediately the child vomited. तो जैसे ही उन्होंने कुछ बूंदी डाले थे बच्चे के मुख में, तो बच्चे ने उल्टी कर दी। So they thought, all right, no more of that. We won't give any more of that. तो उन्होंने सोचा कि नहीं, अब हम इसको और नहीं पिलाएंगे। And of course, Abai went on to recover, got back his health, and survived. और धीरे धीरे करके प्रभुपाद जी ठीक हो गए और वो बच गए। And so he was born in a very pious family, and his father had him learn to play mridanga when he was a child. तो प्रभुपाद जी का जन्म एक बहुत ही पवित्र घर में हुआ था और बचपन से ही उनके पिताजी उनको मृदंग बजाना सिखाते थे। And Prabhupada could also play harmonium very nicely. और प्रभुपाद जी को हारमोनियम बजाना भी आता था बहुत अच्छे तरीके से। Prabhupada jokingly told devotees, he said, when I was a young man, there were some women who wanted to marry me simply because my harmonium playing was so good. तो प्रभुपाद जी बहुत ही हंसते हुए ऐसा बताते थे अपने मित्रों को कि जब मैं युवक था तो कुछ युवतियां मुझसे विवाह करना चाहती थीं सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं बहुत अच्छा हारमोनियम बजाता था। So Prabhupada met Bhaktisidhanta, he met the Gaudiya Math in 1933, and he was very attracted to he recognized Bhaktisiddhanta Saraswati, that yeah, I met him 11 years ago in Calcutta. तो गौड़िया मठ के भक्त जब प्रभुपाद जी से मिले 1933 ईस्वी में,
तो प्रभुपाद जी ने एकदम से याद कर लिया कि हाँ मैं श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिला हूँ, मैं इनसे मिला हूँ कलकत्ता में। And he remembers going there, meeting, how he came into the room at Otadanga, which is now, today it's ISKCON property there, the house at Otadanga. प्रभुपाद जी याद करते हैं कि कैसे वो उल्टा डंगा में गए थे और भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिले थे, और आज हम सब के लिए ये बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे पास ये जो उल्टा डंगा जो स्थान है जहाँ प्रभुपाद जी मिले थे भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर से, आज वो ISKCON की प्रॉपर्टी है। You should, if you haven't been there to see the place, you should go. It's worth seeing. It's a very wonderful place, and it was purchased by ISKCON, and it was renovated, and pretty much it's kept the same way as it was in 1922 rather. तो आप में से अगर भक्तों ने उस स्थान को नहीं देखा है तो आप लोग जरूर जाइए, उसको देखिए। उसको बहुत ही सुंदर प्रकार से ISKCON के द्वारा बनाया गया है और प्रयास किया गया है कि उसको उसी स्वरूप में रखें जैसे कि 1922 ईस्वी में था जब प्रभुपाद जी वहाँ पे गए थे। Srila Bhakti Charu Swami Maharaj played a major role in helping to secure this property and in arranging for the design and the restoration of the place. तो परम पुण्य भक्ति चारू स्वामी महाराज ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इस प्रॉपर्टी को लेने के लिए और उसको उसी स्थिति में बनाने के लिए जिस प्रकार का वो था जब प्रभुपाद जी वहाँ पे मिले थे भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर से। Srila Bhaktisidhanta Saraswati Thakur Prabhupada began his Gaudiya Math preaching mission there in that place at Otadanga. श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने प्रभुपाद ने वहाँ से गौड़ीय मठ का प्रचार प्रारंभ किया था उल्टा डंगा में स्थित उस जगह से। He met many of the people he met went on to become devotees and eventually to become sannyasis and leaders in his Gaudiya Math. और कई सारे भक्त जो वहाँ पे मिले भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर से वो आने वाले समय में सन्यासी बने और अच्छे भक्त बने गौड़ीय मठ में। And so Srila Prabhupada also had come in there and met him at that time. श्रील प्रभुपाद जी भी वहाँ पे गए थे उस समय और मिले थे उनसे। And Prabhupada at that time was in his khadi, wearing khadi dhoti, khadi kurta, and he could immediately be recognized as a follower of Gandhi. श्रील प्रभुपाद जी उस समय खादी वस्त्र पहनते थे, खादी कुर्ता, खादी धोती, और उनको देख के ही पहचाना जा सकता था कि ये महात्मा गांधी के अनुयायी हैं, उनके अनुशंसक हैं। So Srila Bhaktisiddhanta Saraswati was sitting there and he saw these young men come in and he immediately addressed them. तो श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जैसे ही देखा इनको वहां आते हुए तो उनकी तरफ and he immediately said to them, "You're nice young men, why don't you dedicate yourself to the mission of Chaitanya Mahaprabhu?" तो उनको देखते ही श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि आप सब नवयुवक हैं, अच्छे लोग हैं, क्यों नहीं आप अपना जीवन चैतन्य महाप्रभु के दिशा निर्देशों के प्रचार में लगाते हैं। So that was the very first meeting, the very first encounter with Bhaktisiddhanta Saraswati. तो ये पहला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद से मिलना था श्रील प्रभुपाद जी का। And our own Srila Prabhupada describes how at first he tried to argue with him. और हमारे अपने श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि कैसे वो उस समय भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर से किस प्रकार से तर्क वितर्क कर रहे थे। He said to him, "How can we preach Chaitanya Mahaprabhu's mission when our country is not free?" तो श्रील प्रभुपाद जी ने बोला कि हम कैसे महाप्रभु के संदेशों का प्रचार कर सकते हैं जब हमारा देश गुलाम है। India at that time was under the rule of the British. भारत उस समय अंग्रेजों के शासन के अधीन था। And of course Mahatma Gandhi was working, that was his main mission, that he wanted to get independence for India. और महात्मा गांधी उस समय आंदोलन कर रहे थे कि किस प्रकार से भारत को स्वतंत्र बनाया जाए। And our Srila Prabhupada was one of his followers. He was supporting also. और हमारे अपने श्रील प्रभुपाद जी उस समय गांधी जी के अनुयायी थे। But when Bhaktisiddhanta Saraswati heard this, he did not accept. He said, "No, no, no, that's not important."
तो भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर ने जब ये सुना तो उन्होंने उसको निरस्त कर दिया, बोला नहीं नहीं नहीं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। The message of Chaitanya Mahaprabhu is more important. It cannot wait for some political adjustment. तो श्री चैतन्य महाप्रभु का जो संदेश है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये रुक नहीं सकता किसी भी प्रकार के राजनीतिक कारणों के लिए। It's not important for the country. What's really important is that we should distribute this message of Chaitanya Mahaprabhu. तो ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हम चैतन्य महाप्रभु के संदेशों का वितरण करें। And Srila Bhaktisiddhanta Saraswati went on to enforce that and to fix it into the mind of our own Bhaktivedanta Swami Prabhupada. और श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बार बार जोर देकर ये जो बिंदु है हमारे अपने भक्ति वेदांत श्री प्रभुपाद जी के मन में इसको बिठाना चाहते थे। So Srila Prabhupada describes that he understood from their first meeting that he'd met a very great personality and he was deeply impressed. श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि उनको समझ में आ गया था कि वो एक बहुत ही विशेष व्यक्ति से मिलकर आए हैं और उनसे वो बहुत प्रभावित हुए। But he said, I was just a young man, I was recently married, I had a child, how could I ever take up this mission? तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि लेकिन उस समय वो सोचते थे कि मैं तो अभी बहुत युवक हूँ, अभी अभी मेरी शादी हुई है, मेरा एक बच्चा है, मैं कैसे इस मिशन में जुड़ सकता हूँ। So 1922, that was 1922, 11 years later, 1933, Srila Prabhupada had moved to Prayagraj and he's doing his business and the Gaudiya Mat come along and he's interested and he gets involved and he starts going regularly to the temple. तो ये 1922 की बात थी, अब 1933 है और श्रील प्रभुपाद जी प्रयागराज में आ चुके हैं, यहाँ पे वो अपना छोटा व्यवसाय प्रारंभ कर चुके हैं और गौड़ीय मठ के भक्त वहाँ पे आते हैं, उनसे मिलते हैं और उनसे मिलते ही श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही आतुर हो जाते हैं उनके साथ मिलकर काम करने के लिए। And the devotees in the temple were very happy to see him come. He's a Bengali, he knows Sanskrit, he knows English, he knows Madanga playing. और जो गौड़ीय मठ के भक्त थे उनके लिए भी बहुत खुशी की बात थी क्योंकि उनको एक ऐसा व्यक्ति मिल गया जो कि बंगाली था, उसको संस्कृत आता था, उसको अंग्रेजी आता था, उसको मृदंगा बजाना आता था। And so when Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada came there, he was introduced to them, to him to be initiated. तो श्रील प्रभुपाद जब वहाँ पे आए तो उनको भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर से उनका भेंट कराया गया और उनकी दीक्षा की बात हुई। So previously, there was another incident where Bhaktisiddhanta Saraswati also noticed Srila Prabhupada's eagerness to hear. तो इससे पहले की एक घटना है जहाँ पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस बात को नोट किया था कि श्रील प्रभुपाद, हमारे जो श्रील प्रभुपाद जी हैं, उनको सुनना बहुत अच्छा लगता है। It must have been after his initiation. ये उनके दीक्षा के बाद की बात है शायद। Srila Bhaktisiddhanta Saraswati initiated Prabhupada in 1933. He disappeared from the world in 1936. तो श्रील प्रभुपाद जी, हमारे श्रील प्रभुपाद जी की दीक्षा हुई भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से 1933 में और सन 1936 में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का तिरुभाव हो गया था। So one time it happened that there was a parikrama in Mathura, in Vrindavan, to the different temples. तो एक बार की बात है कि मथुरा वृंदावन में, व्रज में एक परिक्रमा निकाली जा रही थी अलग अलग मंदिरों की। And Bhaktisiddhanta Saraswati was there, and our own Srila Prabhupada also went there to get association with his spiritual master. तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वहाँ पे थे और हमारे अपने श्रील प्रभुपाद जी भी वहाँ पे गए अपने आध्यात्मिक गुरु का संग लेने के लिए। So anyway, there was a program. It was announced tonight. Guru Maharaj Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada will give a talk, but there's also another program, and if you want, you can go for the other program. You devotees can decide which program you want to go to. तो ये घोषणा की गई कि आज का जो कार्यक्रम रहेगा कि हमारे गुरु महाराज जी का प्रवचन होगा
और साथ ही साथ एक और भी कार्यक्रम है जिसमें कि भक्त लोग दूसरे मंदिरों का दर्शन करने जाएंगे, तो आप चुन सकते हैं दोनों में से किस कार्यक्रम में आपको भाग लेना है। So the other program was to go and visit a temple, and it was, many of the devotees say, "I want to go and see that temple." तो जो दूसरा कार्यक्रम था उसमें था कि किसी मंदिर का दर्शन करने के लिए जाना था भक्तों को, तो बहुत सारे भक्त उस कार्यक्रम में भाग लेना चाहते थे। They didn't stay to hear the lecture. तो वो प्रवचन सुनने के लिए नहीं रुके। So when Bhaktisidhanta Saraswati Prabhupada came to give the lecture, there were only a few devotees there. तो जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रवचन देने के लिए आए तो वहाँ पे सिर्फ कुछ ही भक्त बैठे हुए थे। But one of them was our founder Acharya, Bhaktisidhanta Swami Srila. और उनमें से एक थे हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी। Although he was a very new devotee, he wanted to hear the lecture. हालांकि वो एक नए भक्त थे, लेकिन फिर भी वो प्रवचन सुनना चाहते थे। And therefore, Bhaktisiddhanta Saraswati noticed him, that this man likes to hear. तो इसी समय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ये चिन्हित कर लिया था कि ये जो भक्त है इसको सुनना बहुत अच्छा लगता है। And of course, Srila Prabhupada, he said also, he said, when I would hear my Guru Maharaj speak, he said, so often I could not understand what he was talking about. तो हालांकि श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि जब मैं कई बार अपने गुरु महाराज को सुनता था तो मैं समझ नहीं पाता था कि वो किस विषय में बात कर रहे हैं। We heard when His Holiness Bhakti Vikasa Swami Maharaj was speaking about Bhaktisiddhanta Saraswati, he was describing how difficult sometimes it would be to understand what he was talking about. हमने सुना था कुछ दिन पहले जब भक्ति विकास स्वामी महाराज प्रवचन दे रहे थे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के बारे में कि कितना मुश्किल होता था उनको समझ पाना, उनके प्रवचनों को समझना। He would speak on such a high level, and he would use a language which was so high that it would be difficult for the ordinary people to understand. क्योंकि उनका जो प्रवचन होता था बहुत ही उच्च स्तर का होता था और कई बार जब वो भाषा का इस्तेमाल करते थे उसको भी समझ पाना इतना आसान नहीं होता था। So it was not surprising that new devotees, a new person coming in, it's definitely there's some language problem. The words which are used in the discourses are not quite the same as in general talking. तो इसमें कोई विस्मय नहीं है कि अगर कोई नया भक्त आए भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर को सुनने के लिए तो उसमें कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जो कि साधारणतः उसका इस्तेमाल नहीं होता था। Just like in English we have words like, oh, he blooped. तो जैसे अंग्रेजी में कुछ शब्द हैं कि अरे वो गायब हो गए। And then Prabhupada uses words like unalloyed devotion. और प्रभुपाद जी कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते थे कि when I first came to Krishna consciousness, I was puzzled that how is it he's using this word unalloyed? तो मैं जब पहली बार सुना ये सब unalloyed devotion तो मुझे भी बड़ा विस्मय हुआ कि ये कैसे इस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। So Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, because he was the seminal son of Bhaktivinoda Thakur, and because he spent a lot of time hearing the lectures of Bhaktivinoda Thakur, when he would speak on a very high level. तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो कि श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी के पुत्र थे, क्योंकि उन्होंने भक्तिविनोद ठाकुर को बहुत बारी सुना था उनके प्रवचनों को, तो कई बार जब वो बोलते थे तो बहुत ऊंचे स्तर की बात होती थी जिसको समझना इतना आसान नहीं होता था। But Srila Prabhupada describes that even though I could not understand everything he was saying, I did not go away. लेकिन श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि तो भी उनको हालांकि समझ में नहीं आता था कई बार क्या भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उठ के जाते नहीं थे। This is the very important qualification for someone coming into Krishna consciousness. तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है उनका जो कि कृष्ण भावनामृत में जुड़ते हैं। That they're eager, that they like to hear. कि वो आतुर हो सुनने के लिए, उनको अच्छा लगता हो सुनना।
In Srimad Bhagavatam, Sukadeva Goswami is describing to Maharaj Parikshit that not everybody likes to hear. तो श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी श्री परीक्षित महाराज को बताते हैं कि हर किसी को सुनना अच्छा नहीं लगता. He said there are people who don't like to hear. Their ears are like the holes which is occupied by the snakes in the field. तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि ऐसे लोग हैं जिनको सुनना अच्छा नहीं लगता है. उनके कान ऐसे हैं जैसे कि सांप के बिल हों. The field mice, they will make little holes in the field for themselves to live. वो अपने खेतों में ऐसा छोटा छेद बनाते हैं और खुद रहते हैं उसके अंदर. And the snake will come and they will enter the hole and eat the mouse and live in the hole. तो जो चूहे होते हैं वो ऐसा बिल बनाते हैं खेत के अंदर, तो उसमें सांप आ जाता है और चूहों को खा लेता है और खुद उसमें रहने लगता है. In the same way, our ears are meant to be used in the service of Lord Krishna. उसी प्रकार से हमारे जो कान हैं वो बने हैं कि हम कृष्ण की सेवा में इनका इस्तेमाल कर सकें. Our ears are meant for hearing the glories of the Lord. हमारे कान इसलिए बने हैं कि हम भगवान का गुणानुवाद सुन सकें. But if we don't use them for that purpose, then all the other mundane sounds will enter the ears. तो लेकिन अगर हम भगवान के बारे में नहीं सुनेंगे तो जो भौतिक विषय वस्तु हैं, जो भौतिक बातें हैं, वो हमारे कानों में प्रवेश करेंगी. The mundane sounds will enter in and pollute the consciousness. ये भौतिक जो बातें हैं वो हमारे कानों के माध्यम से घुसेंगी और हमारी चेतना को प्रदूषित कर देंगी. So it's very important for everyone to hear about Krishna. तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है सबके लिए कि वो कृष्ण के बारे में श्रवण करें. And from the very beginning of his contact with the devotees, our own Srila Prabhupada had that desire to hear. और शुरुआत से ही जब हमारे श्रील प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिले तो उनकी बहुत इच्छा होती थी कि ध्यान पूर्वक अपने गुरु को सुने. Now Prabhupada, of course, was the founder, Acharya. So in the 1960s and 70s, everywhere Prabhupada went, he would be lecturing constantly. तो प्रभुपाद जी क्योंकि वो संस्थापकाचार्य हैं, तो 1960 और 1970 के दशक में वो जहाँ भी जाते थे तो वहाँ प्रवचन देते थे. But he also liked to hear. लेकिन उनको सुनना भी बहुत अच्छा लगता था. And he would regularly request different devotees to speak. और वो बहुत ही बार अलग अलग भक्तों को बोलते थे कि आप प्रवचन दीजिए. I was here in Mayapur in 1977 and Srila Prabhupada was in poor health. तो मैं यहाँ पे था मायापुर में 1977 में और उस समय श्रील प्रभुपाद जी की तबीयत बहुत अच्छी नहीं थी. And a program had been arranged outside at the ashram of one of the associates of Chaitanya Mahaprabhu. और एक कार्यक्रम की व्यवस्था की गई थी चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद के घर. So Srila Prabhupada went, but he didn't speak. तो श्रील प्रभुपाद जी वहाँ गए लेकिन वहाँ पे उन्होंने प्रवचन नहीं दिया. Instead, he had Jayapataka Swami Maharaj speak and Tamal Krishna Goswami Maharaj speak. और स्थान पे उन्होंने जयपताका स्वामी महाराज और तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को कहा बोलने के लिए. And Prabhupada was so happy to hear them both speak so powerfully the glories of Chaitanya Mahaprabhu. और प्रभुपाद जी को बहुत अच्छा लगा सुन के कि कितने अच्छे प्रकार से ये दोनों भक्त जो है वो चैतन्य महाप्रभु का गुणगान कर रहे हैं. Another time in Calcutta, Prabhupada was to give initiation. He was to give initiation and he asked one of his sannyasis, the sannyasi at that time, the Achyutananda Swami, he asked Achyutananda Swami to give the class and talk about the 10 offenses. तो एक बार और की बात है, कलकत्ता में जब श्रील प्रभुपाद जी एक दीक्षा कार्यक्रम में थे तो वहाँ पे उन्होंने अपने एक सन्यासी से अच्युतानंद स्वामी को बोला कि आप हरिनाम के प्रति जो 10 नाम अपराध हैं उनके बारे में बोलिए. And Prabhupada enjoyed, he would often tell devotees, he said, I am hearing the lectures of my disciples. He said, it's very pleasing to me.
और प्रभुपाद जी कहते थे कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपने शिष्यों को बोलते हुए सुनता हूँ। And sometimes he would also point out little defects which were made. और कई बारी वो जो प्रवचन के दौरान जो प्रभुपाद के शिष्य गलतियां करते थे उसको भी इंगित करते थे। Just like one time Achyutananda Swami said, Krishna is in his name. तो जैसे एक बारी अच्युतानंद स्वामी महाराज ने बोला कि कृष्ण अपने नाम में है, Prabhupada immediately interrupted, said, Krishna is his name. तो प्रभुपाद जी ने तुरंत ही उनको टोका और बोला कि कृष्ण ही अपने नाम में, कृष्ण ही उनका नाम, कृष्ण और कृष्ण नाम में कोई भेद नहीं है। If you say Krishna is in his name, you're making a difference between Krishna and his name. अगर आप ये कहते हैं कि कृष्ण अपने नाम में है तो आप कृष्ण में और उनके नाम में भेद कर रहे हैं। But Lord Krishna is not different from his name. लेकिन भगवान कृष्ण अपने नाम से अलग नहीं है, भिन्न नहीं है। Srila Prabhupada pointed out this little adjustment which he wanted made. He wanted everyone to understand very clearly. तो प्रभुपाद जी ने ये जो त्रुटि थी उसको इंगित किया क्योंकि वो चाहते थे कि हर कोई इस बात को समझ ले। So Prabhupada liked to hear, and it wasn't just when he was a disciple of Bhaktisiddhanta Saraswati. After he became the founder Acharya, he also continued to hear. तो श्रील प्रभुपाद जी को सुनना अच्छा लगता था, सिर्फ उसी समय नहीं जब वो भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य थे, उस समय भी जब वो इस्कॉन के संस्थापकाचार्य बन गए तब भी वो सुनना पसंद करते थे। He would talk to the devotees and ask them, what service are you doing? तो भक्तों से बात करते थे और उनसे पूछते थे कि आप क्या सेवा कर रहे हैं। And if the devotee said, Srila Prabhupada, I've been out distributing your books all day. और जब शिष्य कहते थे कि प्रभुपाद जी मैं पूरे दिन बाहर था और आपके पुस्तकों का वितरण कर रहा था, So Srila Prabhupada would ask the devotees, what do people say about my books? तो श्री प्रभुपाद जी उनसे पूछते थे कि लोग क्या कहते हैं मेरी पुस्तकों के बारे में। Prabhupada was very concerned. He wanted to know what people thought about his books. तो प्रभुपाद जी जानना चाहते थे कि लोग क्या बातें करते हैं उनके पुस्तकों के बारे में। And he would ask the devotees, what are people saying about my books? और वो अपने शिष्यों से पूछते थे, भक्तों से पूछते थे कि लोग क्या बातें करते हैं मेरी पुस्तकों के बारे में। Another time, there was a life member. Well, you know, here in India we have a lot of life members. So one life member came, met Prabhupada. तो एक बार की बात और है कि एक आजीवन सदस्य थे। यहाँ पे भारत में बड़े सारे आजीवन सदस्य होते हैं। Prabhupada's program, usually like in the afternoon, he would arrange time, he would have like a public darshan and people could go and sit there, and sometimes Prabhupada would talk, sometimes somebody would read, sometimes he would discuss something with the people there. तो आमतौर पे जब श्रील प्रभुपाद जी शाम के समय में लोगों से मिलने के लिए उपस्थित होते थे, लोग उनसे मिलने के लिए आते थे और प्रभुपाद जी के पुस्तकों को पढ़ते थे और उनसे सुनते थे। So this one life member said to Srila Prabhupada, he said, you know Swamiji, he said, your back to Godhead is very nice. तो एक बार एक आजीवन सदस्य ने श्रील प्रभुपाद जी को बोला कि अरे स्वामी जी आपका ये जो भगवत दर्शन पत्रिका है बहुत अच्छा है। And but he said, your Srimad Bhagavatam is also very nectarian. और आपका जो श्रीमद् भागवतम है वो भी बहुत रसमयी है। He said, why don't you put excerpts from the Srimad Bhagavatam in your back to Godhead every month? तो उन्होंने प्रभुपाद जी से बोला कि क्यों नहीं आप श्रीमद् भागवतम से कुछ चीजें हैं अपनी पत्रिका बैक टू गॉडेड भगवत दर्शन पत्रिका में डालते हैं। And Prabhupada looked at the man and said, that's a very good idea. श्रील प्रभुपाद जी ने उनकी तरफ देखते हुए बोला हाँ ये तो कि बहुत अच्छा विचार है। And Prabhupada immediately called his secretary and said, write a letter immediately to the public, to our Los Angeles office, and tell the editors of the Back to Godhead, every month they must include a section of Srimad Bhagavatam. और उसी समय प्रभुपाद जी ने अपने सेक्रेटरी को बुला के उसको आदेश दिया कि आप अभी फोन करो और जो भगवत दर्शन पत्रिका के जो एडिटर्स हैं उनको आप बोलो कि हर महीने श्रीमद् भागवतम का कुछ न कुछ भाग जो है वो इस पत्रिका में
प्रकाशित होनी चाहिए। And giving you some examples how Srila Prabhupada liked to hear, and he heard constantly. तो मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूँ कि कैसे श्रील प्रभुपाद जी को सुनना बहुत अच्छा लगता था और वो बार बार लगातार सुनते रहते थे। I had the experience myself in 1970, must have been like 74, but 75. I was in Krishna Balaram Mandir. तो ये मेरा खुद का व्यक्तिगत अनुभव है। सन 1975 की बात है कि हम कृष्ण बलराम मंदिर वृंदावन में थे। So noon arti came, the midday arti, and I started to do kirtan. तो दोपहर की आरती का समय हो गया और मैंने कीर्तन करना प्रारंभ किया। I picked up kartals and started to play the kartals and lead the kirtan. तो मैंने करताल उठाया और करताल बजाकर कीर्तन करना शुरू किया। Couple of minutes later, Prabhupada's secretary came out from his room. तो थोड़े समय बाद ही प्रभुपाद जी के जो सेक्रेटरी थे वो आए अपने रूम से बाहर। Right? You've been in Vrindavan, many of you. You've been there in Vrindavan. You know Prabhupada's room is behind the temple. It's separate from the temple and it's just behind the temple. तो आप में से कई भक्त वृंदावन गए हैं, आपने देखा होगा कि किस प्रकार से जो श्रील प्रभुपाद जी का कमरा है वो मंदिर के पीछे के हिस्से में है। So Prabhupada sent his servant, his secretary into the temple, and he came to me and he said, Prabhupada wants to know, why is nobody playing Madanga? तो प्रभुपाद जी के जो सेक्रेटरी सेवक आए वहाँ पे, उन्होंने पूछा महाराज से कि प्रभुपाद जानना चाहते हैं कि कोई मृदंग क्यों नहीं बजा रहा। I was just with a few other new people and I was just playing kartals and there was nobody there to play Madanga. तो मैं वहाँ पे कुछ ही लोग थे, कुछ नए लोग थे, मैं करताल बजा रहा था और वहाँ पे मृदंग बजाने वाला कोई नहीं था। But Prabhupada was sitting in his room and he was hearing, he was listening to the kirtan. He said, when there is kirtan, there must be Madanga and kartal. प्रभुपाद जी जब वहाँ पे अपने कमरे में सुन रहे थे कीर्तन को, और प्रभुपाद जी ने ऐसा कहा कि जब भी कीर्तन हो तो करताल और मृदंग दोनों होना चाहिए। Prabhupada would be constantly hearing everything. तो प्रभुपाद जी बार बार लगातार सुनते थे सब कुछ। Another thing which he would hear in Vrindavan, in the night, he would sometimes call for his secretary and he would say to his secretary, do you hear it? तो एक दूसरी चीज जो प्रभुपाद जी वृंदावन में सुनते थे, कई बारी रात को वो अपने सेक्रेटरी को बुलाते थे और पूछते थे कि क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है? The secretary said, Prabhupada, I don't hear anything. तो सेक्रेटरी कहते थे प्रभुपाद जी, प्रभुपाद मुझे तो कुछ नहीं सुनाई दे रहा। Prabhupada said, that's right. It must be they're sleeping. तो प्रभुपाद कहते थे हाँ सही है, सब सो रहे होंगे। Go and wake the watchman up. जाओ और जाके जो पहरेदार है उसको उठाओ। He's supposed to ring the bell on every hour. उसको हर घंटे पे, जो वृंदावन में बड़ा सा घंटा है, हर घंटे पे जो बजाया जाता है। It's already 10 minutes past the hour. He hasn't rung the bell. तो ये 10 मिनट ऊपर हो गया है और उसने घंटा नहीं बजाया। Go and wake him up. जाओ और उसको उठाओ। The middle of the night, Prabhupada was so conscious. He was hearing very carefully. तो बीच रात में अब देखिए प्रभुपाद जी की चेतना कितनी उसमें लगी हुई थी कि उनको सुनाई देता था, सब कुछ सुनते थे। He wanted everything to be done nicely. प्रभुपाद चाहते थे कि हर कुछ सबसे अच्छे तरीके से हो। So hearing is the first anga in the 9 angas of bhakti. तो श्रवण जो भक्ति के 9 अंग है उसमें से सबसे पहला है, सबसे प्रमुख है। If you read the 12th canto Srimad Bhagavatam, it describes there that hearing is necessary before you can do any of the other angas of bhakti. तो आप श्रीमद् भागवतम के 12 स्कंद को पढ़ेंगे तो आप वहाँ पे देखेंगे ऐसा उद्धृत है कि जो श्रवण है वो भक्ति के और अंगों के पालन करने से पहले श्रवण करना बहुत जरूरी है। If you have not heard, you won't be able to chant. अगर आपने श्रवण नहीं किया है तो आप कीर्तन भी नहीं कर पाएंगे। How can you remember if you've not heard anything? आप कैसे स्मरण करेंगे जब तक आपने श्रवण नहीं किया है? How can you offer any prayers?
आप कैसे कोई प्रार्थना कर पाएंगे? All of the different 9 angas of devotion, they all depend on hearing. तो भक्ति के जो बाकी के जितने भी अंग हैं, सब किस पे आधारित हैं? श्रवण के ऊपर। That's why we see in Bhagavad Gita, after Lord Krishna has finished his description of the yoga ladder, then he begins chapter 7 and immediately talks about hearing. इसीलिए जब हम श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि जैसे ही भगवान श्री कृष्ण योग की सीढ़ियों का वर्णन खत्म करते हैं तो 7वें अध्याय से वो श्रवण के महत्व के ऊपर चर्चा करना प्रारंभ करते हैं। The very first verse of the 7th chapter begins, Lord Krishna is speaking to Arjuna and he says, "Now hear, O Arjuna." तो 7वें अध्याय भगवद गीता के पहले श्लोक में ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन अब सुनो। How by practicing yoga in full consciousness of me, you can know me in full, free from doubt. तो कैसे आप संशय रहित होकर मुझे पूर्ण रूप से जान सकते हो योग के माध्यम से। Right? The words used in the first verse, touch Shrinu, now hear. The Prabhupada said, very important. This Krishna is speaking about the importance of hearing. तो इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं तत् श्रेणु। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान कृष्ण इसको बहुत जोर देते हुए कह रहे हैं कि अब सुनो, सुनना बहुत आवश्यक है। And so Lord Krishna had described the yoga ladder and how bhakti is at the top of the yoga ladder. So chapter 7 he begins to speak about bhakti yoga. तो अभी तक भगवान श्री कृष्ण ने योग की सीढ़ियों के बारे में बताया है कि किस प्रकार जो भक्ति है वो योग की सबसे ऊपरी सीढ़ी है, और अब 7वें अध्याय से वो भक्ति के बारे में बोलना प्रारंभ करते हैं। And he begins to speak about the importance of hearing. और वो प्रारंभ करते हैं श्रवण के महत्व के ऊपर बोलने से। Similarly, we have Lord Kapila talking to his mother Devahuti. इसी प्रकार से हम भागवतम में देखते हैं कि कपिल देव किस प्रकार से अपनी माता देवहूति से बात करते हैं। Satam prasanga mama virya samvido bhavanti ridkarana rasayana kata jasjoshana jashapavarga vartmani shradharatir bhaktir anukramishati. Lord Kapila is describing topics of Lord Krishna when heard in the association of the devotees is very pleasing to the ear and to the heart. तो भगवान कपिल देव बता रहे हैं अपनी माता को कि किस प्रकार से जब हम भगवान के बारे में भक्तों के संग में आके सुनते हैं तो हृदय को कितना अच्छा लगता है। So we have to hear in the association of devotees. तो हमें भक्तों के संग में आके श्रवण करना है। Those people who are not devotees, they can also hear, but they may not have quite the same taste for hearing. तो जो भक्त नहीं है वो भी सुन सकते हैं, लेकिन उनका भगवान के बारे में सुनने का जो स्वाद है वैसा शायद ना हो। Now Srila Prabhupada describes that in our Krishna conscious society, we're very liberal. We don't demand that everyone must first be a devotee before they can hear. तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हम सबका स्वागत करते हैं। हम ऐसा नहीं कहते कि जब तक भक्त नहीं बन सकते तब तक हमारी संस्था में नहीं जुड़ सकते। There's open doors. People can come. The public are invited. They can come and take a seat and sit and hear. तो ये खुला दरवाजा है, यहाँ पे कोई भी आ सकता है, स्थान ले सकता है और सुन सकता है। And so long as they don't disturb, we don't mind. We're quite happy. Let them hear. तो हमें तब तक कोई समस्या नहीं है जब तक वो किसी प्रकार का कोई अड़चन ना डाले। आप सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। Hearing is the initial step in Bhakti Yoga. We have to hear. तो भक्ति योग में जो प्रारंभिक स्थिति है वो है भगवान का श्रवण करना। हम सबको श्रवण करना है। And we have to hear regularly and for a long time. और हमें लगातार सुनना है, लंबे समय तक सुनना है। We're told Nityam Bhagavata Sevaya.
then by hearing the Bhagavatam regularly for a long time, then our heart can be changed. तो बार बार लगातार लंबे समय तक अगर हम भागवतम का श्रवण करेंगे तो हमारे हृदय में परिवर्तन आएगा। So Srila Prabhupada, from the very beginning of his contact with devotees, he showed his eagerness to hear. तो श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत शुरुआत से ही भक्तों के संपर्क में आते ही उन्होंने श्रवण के प्रति अपनी आतुरता को प्रदर्शित किया। And we want to continue this Krishna consciousness movement in the same manner, giving more and more people the opportunity to hear about Krishna. और हम इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को इसी प्रकार से आगे बढ़ाना चाहते हैं और लोगों को खूब मौका श्रवण करने का देना चाहते हैं। When Lord Chaitanya Mahaprabhu was in Kurmakshetra, he met the Brahmin who wanted to go with him. He wanted to leave his home and go with Chaitanya Mahaprabhu. तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब कुरुक्षेत्र में उस ब्राह्मण से मिलते हैं जो कि चैतन्य महाप्रभु के साथ जाना चाहता था, but Chaitanya Mahaprabhu did not encourage that. He didn't like people to abruptly give up their responsibilities. तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको बहुत प्रोत्साहित नहीं किया अपने साथ चलने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई बीच में ही अपने कार्यों को छोड़ दे। He liked to see people steady in their service. वो देखना चाहते हैं कि किस प्रकार से जो भक्त है अपनी सेवाओं में निरंतर लगे हुए हैं। He was not pleased when Gadadhar wanted to give up his service and follow Chaitanya Mahaprabhu. वो प्रसन्न नहीं हुए जब गदाधर पंडित उनके साथ आना चाहते थे अपनी सेवा छोड़कर। Lord Chaitanya had already given the service of Gopinath to Gadadhar Pandit, and Gadadhar Pandit had taken the vow, Kshetra Sannyas. श्रीमान चैतन्य महाप्रभु ने गदाधर पंडित को गोपीनाथ अर्च विग्रहों की सेवा करने के लिए दिया था और गदाधर पंडित ने क्षेत्र संन्यास का व्रत भी लिया हुआ था। But when Lord Chaitanya announced that he was going to travel to South India, then Gadadhar said, I also want to go with you. परंतु जब चैतन्य महाप्रभु ने घोषणा की कि वो दक्षिण भारत की यात्रा पर जा रहे हैं, तो गदाधर पंडित भी उनके साथ आना चाहते थे। And Lord Chaitanya told him, no, you have to stay here. तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोला, नहीं, आपको यहीं पे रहना है। Of course, here at that time was Puri. They'd come to live in Puri, and Gadadhar had taken the vow to stay there in Puri. तो उस समय वो पुरी में रह रहे थे, गदाधर पंडित भी और चैतन्य महाप्रभु भी, और गदाधर पंडित ने पुरी में रहने का व्रत लिया था। And Chaitanya Mahaprabhu insisted on Gadadhar staying there. He would not allow Gadadhar to go with him. चैतन्य महाप्रभु ने बल दिया इस बात पे कि गदाधर पंडित उनके साथ न जाएं, वो वहीं पे रहें। Until then, when Mahaprabhu came to Kurmakshetra, the Brahmana brought him to his home and fed him and honored him, and then said, "Take me with you." तो जब चैतन्य महाप्रभु कुरुक्षेत्र में आए तो वो ब्राह्मण उनको अपने साथ अपने घर ले गए, वहाँ पे उन्होंने उनको प्रसाद खिलाया और फिर ये निवेदन किया कि वो खुद चैतन्य महाप्रभु के साथ जाना चाहते हैं। The Brahmana told Mahaprabhu, "I can no longer tolerate the pains of material life." तो उस ब्राह्मण ने चैतन्य महाप्रभु को कहा कि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता ये भौतिक संसार के जो कष्ट हैं। But Mahaprabhu told him, "No, no, no, that is not our process." तो चैतन्य महाप्रभु ने लेकिन उनको बोला, नहीं नहीं नहीं, ये हमारा प्रक्रिया नहीं है। Mahaprabhu, of course, gave the famous instruction, "Yari dekhi tari kaho Krishna upadesh, amara gai guru hana taraye desh." Wherever you go, whoever you meet, tell them about Krishna. और चैतन्य महाप्रभु ने उनको ये प्रसिद्ध निर्देश दिया कि आप जहाँ भी जाइए, जिससे भी मिलिए, उसको भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताइए। And Mahaprabhu said, "Amara gaya guru hana, become a guru by my order. I want you all to become spiritual teachers and save the world." और मेरे आदेश से आप गुरु बनिए। मैं चाहता हूँ कि सब गुरु बने, सब आध्यात्मिक गुरु बने और इस विश्व को बचाएं। And how to save the world? Simply by telling people about Krishna. और कैसे इस विश्व को बचा सकते हैं? सिर्फ ये बता के भगवान के विषय में, कृष्ण के बारे में। So Mahaprabhu was encouraging this Brahmana to let people hear about Krishna.
तो महाप्रभु इस ब्राह्मण का उत्साह बढ़ा रहे थे, ये कहते हुए कि लोगों को मौका मिलना चाहिए कृष्ण के बारे में सुनने के लिए। And similarly, when Mahaprabhu met with Ramananda Rai, later on as Mahaprabhu moved further south and he came to the Godavari and he met Ramananda Rai. और इससे आगे जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण की तरफ और आगे बढ़े तो गोदावरी के तट पे वो रामानंद राय से मिले। And Ramananda Rai was being questioned by Mahaprabhu. Mahaprabhu wanted to hear verses from the scriptures about the goal of life. और चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से प्रश्न कर रहे थे, वो वैदिक शास्त्रों से जीवन के लक्ष्य के बारे में पूछ रहे थे। So Ramananda Rai first of all described about Varnashram, but Mahaprabhu said, no, that's external. तो रामानंद राय ने पहले वर्णाश्रम के बारे में बताया, तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला नहीं, ये तो बाहरी विषय वस्तु है। So then Ramananda Rai gave a verse from Bhagavad Gita about karmarpanam, offering the results of our work. तो उसके बाद रामानंद राय ने भगवत गीता का संदेश चैतन्य महाप्रभु को बताया कि अपने कर्मों को अर्पित करना भगवान के चरणों में। Lord Chaitanya said, no, go higher. चैतन्य महाप्रभु ने बोला नहीं और आगे बढ़ो। So then he gave another verse from Bhagavad Gita, Swadharma Tyag, giving up our duties and just surrendering to Krishna. तो रामानंद राय ने आगे भगवत गीता से ही बताया कर्म त्याग के बारे में कि अपने कार्यों का परित्याग करना भगवान के लिए। And then Chaitanya Mahaprabhu still wasn't satisfied. He said, keep going, go further. चैतन्य महाप्रभु अभी भी संतुष्ट नहीं हुए, उन्होंने बोला और आगे बढ़ो और आगे बताओ। And then Ramananda Rai gave another verse again from Bhagavad Gita about Jnana Mishra Bhakti. तो रामानंद राय ने आगे और भगवत गीता से ही बताया ज्ञान मिश्र भक्ति के विषय में। But Mahaprabhu's come to preach devotion. He wants to spread pure devotion. So he told Ramananda Rai, keep going. लेकिन महाप्रभु आए हैं शुद्ध भक्ति का प्रचार करने के लिए, वो लोगों को शुद्ध भक्ति के बारे में बताना चाहते थे, इसीलिए वो रामानंद राय को कहते हैं कि और आगे बताओ और आगे बढ़ो। And then Ramananda Rai gave the nice verse from the 10th canto Srimad Bhagavatam spoken by Lord Brahma. तो फिर रामानंद राय जो हैं वो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद से श्लोक उद्धृत करते हैं जो कि ब्रह्मा जी के द्वारा बोला गया। यानी प्रायसम मुदपश्य नमन्त एवा स्पृशन्तिसम जीवन्तिसम भवद्दीयवार्तम स्थाने स्थितां श्रुतिगतं तन्वन्मनोभिर् ये प्रायसो जिता जितोपि asitaistrilokyam. Lord Brahma is saying, remain in whatever your position you're in. And just hear about Krishna in the association of devotees. तो ब्रह्मा जी ये श्लोक में बोलते हैं कि आप जहाँ भी हैं वहीं पे स्थित रहिए और भक्तों के संग में भगवान के बारे में सुनिए, भगवान का गुणगान करिए। And just by hearing about Krishna in the association of devotees, we can conquer Krishna. और सिर्फ भक्तों के संग में श्रवण के माध्यम से आप कृष्ण को जीत सकते हैं। But Krishna is a jita, he is unconquerable. लेकिन कृष्ण जो है वो तो अजीत है, उनको कोई जीत नहीं सकता। But Lord Brahma said he becomes conquered by the pure love of his devotees. तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ऐसे अजीत को भी जीता जा सकता है, कैसे? भक्तों के दिव्य प्रेम के द्वारा। That pure love of the devotee is shown by his hearing faithfully and submissively the glories of Krishna. और ये शुद्ध प्रेम कैसे प्रकट किया जाता है? भक्तों के संग में आके विनम्रता पूर्वक श्रवण के माध्यम से। So we want to follow in the footsteps of the acharyas. तो हम अपने आचार्यों के द्वारा दिखाए गए रास्तों का अनुगमन करना चाहते हैं। Mahajana yena gata sapanta, follow in the footsteps of the great soul. Srila Prabhupada is our modern day Mahajan. तो आचार्यों के द्वारा दिखाए गए रास्तों के ऊपर आगे बढ़ना है और श्रील प्रभुपाद जी आज के युग के महाजन हैं। We want to follow in his footsteps. We also want to develop that taste for hearing. और हम उनके चरण कमलों के जो निशान है उसका परिपालन करना चाहते हैं और हम वो टेस्ट, वो स्वाद डेवलप करना। Now what if you don't have taste? What should you do?
तो क्या करें, हमारे ऐसी रुचि नहीं है हमारे अंदर। Srimad Bhagavatam gives us a solution to this problem. तो श्रीमद् भागवतम में इस समस्या का भी समाधान है। This solution is you have to do service, and by serving the devotees, it will help us to develop the taste. श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि आपको सेवा करनी होगी। आप भक्तों की सेवा करेंगे तो इससे आपको श्रवण में रुचि जागृत होगा। Shushushro Shadadanasya Vasudev Tathai Ruchi Shanmahat Sevaya Vipra Punya Tirtha Nishevana. By serving the devotees who are free from sin, great service is done. By such service, one gains affinity for hearing the message of Vasudeva. तो उन भक्तों की सेवा करने से जो कि पूर्ण रूप से पाप से मुक्त हैं, हमें श्रवण के प्रति आसक्ति हमारे हृदय के अंदर जागृत होता है। So the secret isn't you don't have taste, you don't like to hear, do service, you will get the taste. तो ये रहस्य है, अगर आपके हृदय में रुचि नहीं है श्रवण के प्रति तो आप भक्तों की सेवा करिए, इससे आपको श्रवण करने में रुचि आएगा। Maybe you had experience. Do you remember when you first joined the Krishna consciousness movement? तो आप सबका ऐसा अनुभव होगा, अगर आप याद करें कि जब आप पहली बारी कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जुड़े। I remember when I joined. मुझे याद है जब मैं जुड़ा था। They used to put me in the kitchen every morning. तो मुझे किचन में भेज देते थे हर सुबह। Cut the vegetables. We have to cook prasadam. We need somebody to cut the vegetables, peel the potatoes, do all the service in the kitchen. तो सुबह क्योंकि प्रसाद बनाना होता था तो सब्जियां काटने के लिए कोई चाहिए, आलू छीलने के लिए कोई चाहिए, तो मुझे प्रतिदिन सुबह किचन में सेवा के लिए भेज देते थे। I said, hey, don't I get to go to the other program like all the other devotees? Don't I get to go and sit in the temple room? तो मैं ऐसा सोचता था कि क्या मुझे मौका नहीं मिलेगा कि मैं बाकी भक्तों की तरह जाके अंदर मंदिर के कक्ष में बैठूं? Oh, they said, you just sleep if you go there. बात कहते थे तुम वहां जाओगे तो सो जाओगे। You be here, you serve here in the kitchen. तो आप यहाँ रहो और यहाँ किचन में सेवा करो। And so after serving in the kitchen for some time, when I got the chance to finally go to the temple, I made sure I didn't sleep. तो मैंने कुछ समय किचन में सेवा करी और जब मुझे मंदिर कक्ष में जाने का मौका मिला तो मैंने ये निश्चित किया कि मैं वहां जाके सोऊं नहीं। Okay, so we have 10 minutes more and Bhakti Chaitanya Swami Maharaj is here. तो हमारे पास 10 मिनट और है और परम पूज्य भक्ति चैतन्य स्वामी महाराज यहाँ उपस्थित हैं। Okay, yeah. All right. आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। Yes, Prabhu, what's your question? माइक्रोफोन साउंड मैन कहाँ पे? हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा महाराज, Pranav. Thank you for a very wonderful class on this important topic. Maharaj, today ISKCON is a ocean of transcendental vibrations in the form of books and lectures, so many subject matters, so many topics, so many speakers. So one becomes desperate at this old age, what to hear and what not to hear, whether to hear the same subjects repeatedly or to move on to newer subjects. So many doubts arise in the mind about how to organize our own hearing. Maharaj, I would like to hear your suggestions on this matter. तो प्रभु जी का प्रश्न है कि प्रभु जी पहले महाराज को धन्यवाद कर रहे हैं इतने सुंदर प्रवचन के लिए। उनका प्रश्न है कि आज हम ISKCON में देखते हैं कि इतना कुछ सुनने के लिए है, इतने सारे प्रवचन करता है, इतनी सारी किताबें भी हैं, और जब उम्र बढ़ जाता है, जब बूढ़े हो जाते हैं, उस समय हमें ये सोच पाना कि किसको सुनूं, क्या क्या सुनूं, ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो महाराज से पूछ रहे हैं कि महाराज आप इसमें हमारी मदद करिए। Well, wherever we hear, whatever we hear is all sweet.
तो महाराज कह रहे हैं कि हम जो कुछ भी सुनते हैं, जो कुछ भी हम सुनते हैं वो बहुत मधुर है। Srila Prabhupada gave the example. He said, just like sugar cane. Now, wherever you chew the sugar cane, it's sweet. तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं गन्ने का, कि आप गन्ने को कहीं से भी चूसेंगे तो वो मधुर ही होगा। So whether you hear 10th canto Srimad Bhagavatam or whether you hear Bhagavad Gita, still it's sweet. There's nectar there. तो चाहे आप भागवतम का 10th स्कंद के ऊपर सुने या भगवत गीता सुने, वहाँ पे भी आपको रस मिलेगा, अमृत मिलेगा। We have to have that appreciation for the fact that the holy name is being chanted and the glories of Krishna are being spoken. तो हमारे हृदय के अंदर ये सराहना होनी चाहिए कि कैसे भगवान के नामों का गुणगान हो रहा है, भगवान का गुणानुवाद हो रहा है। And you may think, oh, I didn't learn anything new. और आपको हो सकता है ऐसा लगे कि मैंने कुछ नया तो नहीं सीखा, I've heard all that before. ये तो मैंने पहले भी सुना है। And so, but there's no waste in hearing it again. It enforces the message on our heart. तो ऐसा समय की बर्बादी नहीं है, बार बार अगर हम उस चीज को सुनते हैं तो उसका गहरा प्रभाव पड़ता है हमारे हृदय पर। Hearing is something which we have to, wherever you go, the main thing is that you're hearing topics of Krishna. तो महत्वपूर्ण बात यह है कि आप कृष्ण के विषय में सुने, आप जहाँ भी चाहें कृष्ण के विषय में सुने। And of course, as you're just like you're doing tonight, you're asking question. You want to know. You have an inquiry to make, so that can also be done. और जैसा कि आज आप कर रहे हैं, अभी प्रश्न पूछ रहे हैं, तो अगर आपके हृदय में कोई संशय हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। Your inquiry is appreciated. It's a relevant question. तो आपका जो प्रश्न है हम इसकी सराहना करते हैं, ये एक बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न है। Of course, our main business is to finish our chanting, get your rounds chanted, and then hear from as much as you can. तो हालांकि हमारा जो मुख्य विषय है कि अपने नाम जप को पूरा करें, 16 माला जप को पूरा करें, लेकिन उसके बाद जितना भी समय मिले हमें प्रयास करना चाहिए कि हम श्रवण करें, ज़्यादा से ज़्यादा सुने। Srila Prabhupada liked us to first of all chant, to hear the holy name before we sat and heard the classes. तो श्रील प्रभुपाद जी चाहते थे कि हम पहले भगवान के नामों का जप करें, उसको सुने और उसके बाद फिर कक्षा में आए। A morning program or schedule is like that. We have japa in the morning first. तो हम देखते हैं कि हमारा जो सुबह का कार्यक्रम है वो इसी प्रकार का है कि वहाँ पे जपा सबसे पहले है, And then we hear. और उसके बाद हम कथा सुनते हैं। And then in the course of hearing, there's also exchange. There's enlightening one another and conversing about Krishna. और जब हम वो कथा श्रवण करते हैं तो हम एक दूसरे को कृष्ण के बारे में बताते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। Even though we may think, oh, I've heard all this before, I know all this, but it doesn't do any harm to hear it again. तो हालांकि हो सकता है आपने बहुत सारी चीजें पहले भी सुनी हो, लेकिन उसको दोबारा सुनने में कोई नुकसान नहीं है। There will always be something new which you maybe hadn't grasped. तो आप अगर ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा जो कि आपने पहले नहीं सुना होगा। So we encourage you, just without too much discrimination. Of course, if you hear a more empowered speaker, it's very enlivening. For example, this morning we had Radhana Swami Maharaj speaking. He's a very empowered speaker. तो हालांकि हमें बहुत भेदभाव नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई वरिष्ठ प्रवक्ता हो और जिनको की अनुभव है कृष्ण भक्ति का, उनसे हमें प्रयास करना चाहिए सुनने के लिए। जैसे कि आज सुबह हमने परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज से सुना। So you can consider who is the speaker. Some speakers will be more attractive to you, more powerful, more beneficial. तो आप चुन सकते हैं, आपको कोई प्रवक्ता ज्यादा प्रभावशाली लगते हो, आपको उनके प्रति ज्यादा आकर्षण हो, तो आप चुन सकते हैं। So I'm going to hand over the microphone now to His Holiness Bhakti Chaitanya Swami Maharaj, who is also another wonderful speaker. तो अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा परम पूज्य भक्ति चैतन्य स्वामी महाराज जी को
जो कि एक बहुत ही अच्छे प्रवक्ता हैं। Thank you very much. Srila Prabhupada ki. Hare Krishna. Thank you very much, Maharaj, for the wonderful class. And we thank Maharaj by chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. His Holiness Bhakti Vighna Vinasa Narasimha Swami Maharaj ki. Now we have His Holiness Bhakti Chaitanya Swami Maharaj ki jai. Hare Krishna. So, small introduction about Bhakti Chaitanya Swami Maharaj. As you know already, everybody knows. So, Bhakti Chaitanya Swami Maharaj was born on 14th August 1951 in Auckland, New Zealand. His first contact with Krishna consciousness was while at university in Auckland, where on the university grounds he saw devotees throwing flowers at the lotus feet of Srila Prabhupada while Srila Prabhupada was walking. In 1972, Maharaj left New Zealand to make an extensive world tour and met ISKCON devotees in London and later joined Srila Prabhupada. After taking initiation from Srila Prabhupada, he became involved in public relations and book publications for the Bhaktivedanta Manor, ISKCON's British headquarters. In 1980, he went to South Africa to oversee ISKCON's activities as temple president at Kato Ridge and to help with the overseeing of the construction of Sri Radhanath temple project. But Maharaj is closely associated with the educational programs of ISKCON and teaches courses at the Vaishnava Institute for Higher Education in Vrindavan. 1994, during the Gaurapurna festival, Bhakti Chaitanya Maharaj took to the renounced order of sannyasa. Maharaj has continued to travel extensively preaching the message of Krishna consciousness in Russia, Latvia, Lithuania, Estonia, Poland, England, India, America and South Africa. So महाराज जी के बारे में कुछ शब्द बोल रहे थे कि 14 अगस्त 1991 में ऑकलैंड न्यूजीलैंड में इनका जन्म हुआ है। बाद में ऑकलैंड में, और जब प्रभुपाद जी को पहली बार देखे हैं कॉलेज में, तो सब लोग प्रभुपाद जी के चरणों पर पुष्प डालते हुए देखे हैं और बहुत आकर्षित हो गए हैं। बाद में कुछ ही दिन में वो यात्रा करने, भ्रमण करने गए थे देश विदेशों में, तब वो लंदन में प्रभुपाद जी से मिले हैं और उनसे दीक्षा भी प्राप्त कर लिए हैं और जुड़कर बहुत सारे बुक्स लिखने में, ग्रंथ लिखने में, और ISKCON भक्तिवेदांत मैनर में रहते थे ये 1980 में, और साउथ अफ्रीका में एक बार टेम्पल प्रेसिडेंट बन गए, राइट। और महाराज ऐसे ही बहुत सारे शिक्षा को लेकर शिक्षा विभाग में बहुत सारे काम किए हैं वृंदावन में और बहुत सारे जगह में। ऐसे महाराज जी रसिया में, लत्विया में, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, इंग्लैंड, इंडिया, अमेरिका एंड साउथ अफ्रीका में, इस सब जगह में
प्रचार करते हैं, महाराज दीक्षा भी देते हैं, प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। तो हम अभी महाराज जी से सुनेंगे कि 3 तरह के संगत और त्रिगुण के परे होने के लिए 3 तरह के संगत है, ये लेकर बात करेंगे महाराज। So now today's topic is 3 kinds of association to overcome threefold miseries. So we welcome Maharaj by Haridwani and Uludwani. Hari Bol! Hari Bol! Hari Bol! Hari Bol. Uludwani. धन्यवाद, बहुत सुंदर है। प्रभु जी का हिंदी बहुत बहुत अच्छा है। मेरे हिंदी बहुत खराब है, बहुत खराब है, और मेरा स्वास्थ्य या थोड़ा अच्छा नहीं है। Anyway, what to do? Now I speak mere, how to say, mere अंग्रेजी भाष, and the bitter, what's bitter? Acha. Anyway, my English is better than my Hindi. तो आज कह रहे मेरा अंग्रेजी हिंदी से थोड़ा अच्छा है। And my Hindi is better than my Bengali. मेरा हिंदी बंगाली से अच्छा है। Okay. ठीक है। Well, let's just, okay. Sing Jai Radha Madhava. Oh. बहुत धन्यवाद। Uludwani. It's just a little Uludwani. I should do a bigger Uludwani. Krishna, Krishna. Dhanyavad. Okay. Jai Radha Madhava Kunja Vihare Jai Radha Madhava Kunja Vihare Gopi Jana Vallabha Girivaradhare Gopi Jana Vallabha Girivaradhare Yashodhanandana Braja Jana Ranjana Yashodhanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachare Yamuna Tira Vanachare Jai Radha Madhava Kunja Vihare
Madhava Kunja Bihare Gopi Jana Vallabha Girivaradhare Gopi Jana Vallabha Girivaradhare Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachare Yamuna Tira Vanachare Jai Radha Madhava Kunja Bihare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Prabhupada, Jai Prabhupada Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada Jai Vishnuvad Paramahansa Parivrajacharyas Padasasi Samad His Divine Grace A.C. Bhaktisidhanta Swami Srila Prabhupada Ki ISKCON Samstapakacharya Srila Prabhupada Ki Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Shri Shri Radha Madhava Ki Shri Astasaki Brinda Ki Shri Shri Panchatattva Ki Shri Nrsingadev Bhagavan Ki Shri Giri Govardhan Ki Gopremanande All glories to their Samu devotees, all glories to their Samu devotees, all glories to their Samu devotees, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga, all glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Yes, so devotees, I was asked to say something basically about devotee relationships. तो प्रिय भक्तों, मुझे
ऐसा बताया गया है कि मुझे भक्तों के बीच क्या संबंध होना चाहिए उसके बारे में बोलने के लिए कहा गया है। 3 types of devotee relationships. 3 प्रकार के भक्तों के संबंध as described in Srimad Bhagavatam, 4th canto, chapter 8, verse 34. तो जैसा श्रीमद् भागवतम के 4थे स्कंद के 8वें अध्याय के 34वें श्लोक में बताया गया है। Right, so let us read that verse first of all. तो आइए मिलकर उस श्लोक को पढ़ते हैं सबसे पहले। Gunadikan mudam lipsed, anukrosham gunadamat, maitrim samanad anvichen, natapar abhi bhuyate. And translation, have you got the translation? Okay, I've got it here, yeah. Every man and woman, every person should act like this. When he meets a person more qualified than himself, he should be very pleased. When he meets someone less qualified than himself, he should be compassionate toward him. And when he meets someone equal to himself, he should make friendship with him. In this way, one is never affected by the threefold miseries of this material world. इसका अनुवाद इस प्रकार से है, प्रत्येक मनुष्य को इस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। यदि वह अपने से अधिक योग्य व्यक्ति से मिले तो उसे अत्यधिक हर्षित होना चाहिए। यदि अपने से कम योग्य व्यक्ति से मिले तो उसके प्रति सदैव होना चाहिए, और यदि अपने समान योग्यता वालों से मिले तो उससे मित्रता करनी चाहिए। इस प्रकार मनुष्य को इस भौतिक संसार के त्रिविध ताप कभी भी प्रभावित नहीं कर पाते। I will read the purport. It's a short, fairly short purport. तो मैं तात्पर्य पढ़ूंगा, बहुत ही छोटा सा तात्पर्य है। Generally, when we find someone more qualified than ourselves, we become envious of him. When we find someone less qualified, we deride him. And when we find someone equal, we become very proud of our activities. These are the causes of all material tribulations. The great sage Narada therefore advised that a person should act perfectly. Instead of being envious of a more qualified man, one should be jolly to receive him. Instead of being oppressive to a less qualified man, one should be compassionate toward him just to raise him to the proper standard. And when one meets an equal, instead of being proud of one's own activities before him, one should treat him as a friend. One should also have compassion for the people in general who are suffering due to forgetfulness of Krishna. These important functions will make one happy within this material world. ठीक है। तो तात्पर्य, सामान्यतः अपने से अधिक योग्य व्यक्ति को पाकर हम उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। अपने से कम योग्य व्यक्ति से मिलने पर हम उसका उपहास करते हैं, और अपने समान व्यक्ति को पाकर हम अपने कार्यों के प्रति गर्वित हो उठते हैं। ये ही सभी भौतिक कष्टों के कारण हैं। इसलिए नारद मुनि ने उपदेश दिया कि भक्त को संयत भाव से आचरण करना चाहिए। अपने से अधिक योग्य व्यक्ति से द्वेष करने की अपेक्षा उसका प्रसन्नता पूर्वक स्वागत करना चाहिए। कम योग्य व्यक्ति को पीड़ा पहुंचाने के बजाय उस पर दयामय होना चाहिए, जिससे वह उचित स्तर तक उठ सके। और जब समान गुण वाले किसी व्यक्ति से भेंट हो तो उसके समक्ष अपने कार्यकलापों के प्रति गर्व प्रकट न करके उनके साथ मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए
कि जो श्री कृष्ण को भूल जाने के कारण कष्ट भोग रहे हैं उन सब पर दया भाव रखे। इन प्रमुख कार्यों से मनुष्य इसी जगत में सुखी बन सकता है। I'll read the verse again. तो मैं एक बार श्लोक को दोबारा पढ़ूंगा। Gunadikan Vadan Lipsed Anukrosham Gunadamat Maitrim Samadad Anvichen Natapayarabhibhuyate. Every man should act like this. When he meets a person more qualified than himself, he should be very pleased. When he meets someone less qualified than himself, he should be compassionate toward him. And when he meets someone equal to himself, he should make friendship with him. In this way, one is never affected by the threefold miseries of this material world. तो अनुवाद है कि प्रत्येक मनुष्य को इस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। यदि वह अपने से अधिक योग्य व्यक्ति से मिले तो उससे अत्यधिक हर्षित होना चाहिए। यदि अपने से कम योग्य व्यक्ति से मिले तो उसके प्रति सदैव होना चाहिए, और यदि अपने समान योग्यता वालों से मिले तो उससे मित्रता करनी चाहिए। इस प्रकार मनुष्य को इस भौतिक संसार के त्रिविध ताप कभी भी प्रभावित नहीं कर पाते। Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktisidhanta Swami Nityanamane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Paschachadeshatarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchakapatarubhyascha kripa sindhubhya evacha. Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha. Vaishnavebhyo namo namaha. We offer our respects to all the devotees. हम सभी भक्तों को अपना प्रणाम अर्पित करते हैं। So this is Narada Muni speaking here. तो यहाँ पर नारद मुनि बोल रहे हैं, and he's talking about relationships of juniors to seniors. और वो बात कर रहे हैं कि कैसा संबंध होना चाहिए ऊंचे भक्तों में और जो उनसे नीचे के भक्त हैं उनमें, and then amongst those who are more or less equals, और उन भक्तों में जो कि सामान्यता एक समान, and then those who are senior, how they should relate with juniors. और वो जो कि सीनियर हैं, जो वरिष्ठ हैं, और वो कैसे अपने नीचे के भक्तों के साथ मिलते हैं। So this is a very important part of Krishna consciousness. तो ये कृष्ण भावनामृत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। And Narada Muni emphasizes this in the last sentence in the verse. और नारद मुनि इस श्लोक के आखिरी वाक्य में इस बात पे बहुत जोर देते हैं that if you learn how to deal with these levels, three levels of people in relation to you, then you'll never be affected by the miseries of this world. तो नारद मुनि इस बात पे जोर देते हैं कि अगर आप ये चीज सीख जाते हैं कि किस प्रकार से ये तीन स्तर पे अलग अलग लोगों से हमें व्यवहार करना चाहिए, तो आप इस भौतिक संसार के त्रितापों से बच जाएंगे। So this is a very important point. तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। How to get free from all the miseries of this world. तो संसार के सारे तापों से किस प्रकार बच सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। And Srila Prabhupada in the purport, he repeated the same point. और श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में इसी बात को दोहरा रहे हैं। So we might think that just learning how to interact with different people, how could that free us from all material suffering? तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि ऐसा कैसे है कि कैसे हमें दूसरों के साथ व्यवहार करना है, बस ये सीखने से हमें इस संसार के कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। Anyway, I can just mention one thing that Ramananda Roy says to Lord Chaitanya
in the 8th chapter of Madhya Leela. तो मैं आपको रामानंद राय जी का वो प्रसंग जो कि चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 8वें अध्याय से है, चैतन्य महाप्रभु से जो उनका संवाद है उसके बारे में बताऊंगा। Lord Chaitanya is asking him, what is the most this? What is the most that? तो चैतन्य महाप्रभु उनसे पूछते हैं कि इसके लिए सबसे अच्छा क्या है, उसके लिए सबसे अच्छा क्या है। So he asks Ramananda Roy, what is the most, the thing which creates the most suffering in this world? तो चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से पूछते हैं कि वो क्या ऐसी चीज है जो कि सबसे ज्यादा दुख उत्पन्न करती है इस भौतिक संसार में। And Ramananda Roy replies that except for separation from the devotee, I don't know of any suffering thing in this world. तो रामानंद राय कहते हैं कि भक्तों के संग से दूर होने के अलावा इस संसार में कोई कष्ट हो सकता है, मैं उसको नहीं जानता। So as time goes on, we'll see that physical sufferings are not so important, but if we lose the association of devotees, oh, that's intolerable. तो जैसे समय गुजरेगा हम समझेंगे कि जो शारीरिक कष्ट है वो शायद उतना कष्टकारी नहीं है जितना कि भक्तों के संग से दूर होना है। Anyway, let us just say a few words, some words about these three types of relationships. तो आइए हम कुछ चर्चा करते हैं इन तीन प्रकार के संबंधों के बारे में। So first of all, let's consider the relationships of juniors with their seniors. तो पहले हम चर्चा करते हैं कि कैसे एक नए भक्त को, एक छोटे भक्त को अपने से वरिष्ठ भक्त के साथ संबंध कर रखना चाहिए। And of course, this is just in relation to us. Who is senior to us? और ये समझने के लिए है कि पहले जानना जरूरी है कि कौन हमसे वरिष्ठ है। Someone who may be senior to you is junior to someone else. क्योंकि आपसे कोई वरिष्ठ है वो हो सकता है किसी के लिए वो छोटा होगा, कोई उनसे और वरिष्ठ होगा। So in other words, this is all in terms of our situation in relation to these others. तो ये सब इस संबंध में है कि हमारा दूसरों के साथ कैसा संबंध है। And Prabhupada, when he's talking about this type of relationship, he refers to Bhagavad Gita chapter 4 verse 34. तो श्रील प्रभुपाद जी जब इसके विषय में बात करते हैं तो श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय के 34वें श्लोक के ऊपर बताते हैं। You all know that verse, I assume. तो आप सब ये श्लोक जानते हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। Tadvadi pranipatena pariprashnena sevaya upadekshati te jnanam jnaninas tattvadarshanaha. That if we want to learn the truth, we should inquire from a spiritual master. कि अगर हम सत्य के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें एक आध्यात्मिक गुरु से इसके विषय में पूछना होगा। And in doing that, we should make inquiries and we should render service. और ऐसा करने के लिए हमें प्रश्न पूछने होंगे और उनकी सेवा करनी होगी। And when we talk about those especially elevated devotees, then if you inquire from them, they can give you the absolute truth because they're experienced with the absolute truth. तो अगर हम ऐसे भक्तों से प्रश्न पूछते हैं तो वो हमें परम सत्य के बारे में बता सकते हैं क्योंकि उन्होंने स्वयं परम सत्य का अनुभव किया है। So there are two basic points there. तो यहाँ पे दो मूल विषय वस्तु बिंदु हैं। Pariprashnena, by making inquiries, तो परिप्रश्नेन प्रश्न पूछकर, and sevaya, by rendering service. और सेवया का मतलब सेवा करके। So of course we have to be able to identify who is senior to us. तो हमें इसके लिए ये पहचान करना पड़ेगा कि कौन हमसे वरिष्ठ हैं। And I mean, it's a whole big thing. There are many people who are senior to us.
तो हालांकि ये बहुत बड़ा है, लेकिन हम जानते हैं कि कई लोग हमसे वरिष्ठ हैं। Krishna is senior to us. कृष्ण हमसे वरिष्ठ हैं। Our Guru is senior to us. हमारे गुरु हमसे वरिष्ठ हैं। Those who've been devotees longer than us are senior to us. जो भक्त हमसे पहले जुड़े हैं, हमसे लंबे समय से भक्ति में हैं, वो भी हमसे वरिष्ठ हैं। Those, and you can take it, those who were initiated before us, generally they're senior to us. और जिनका दीक्षा हमसे पहले हुआ है, सामान्यतः वो भी हमसे वरिष्ठ हैं। And in front of these people, we have to be very humble. और इन सबके समक्ष हमें बहुत विनम्र होना है। And be ready to inquire and render service. और हम तैयार हैं उनसे प्रश्न पूछने के लिए और उनकी सेवा करने के लिए। And there's a number of examples in our literatures where we see the examples of these things. और हमारे साहित्य में इसके बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ पे हम इन चीजों को देखते हैं। Probably you know the story of Advaita Acharya when he became disturbed because Lord Chaitanya was always offering obeisances to him before he could offer obeisances to Lord Chaitanya. तो शायद आप सब ये जानते हैं कि कैसे जो अद्वैत आचार्य हैं वो बड़े उद्वेगित हो जाते थे कि जब चैतन्य महाप्रभु उनको प्रणाम कर देते थे, उनके प्रणाम अद्वैत आचार्य को चैतन्य महाप्रभु के प्रणाम करने से पहले चैतन्य महाप्रभु उनको प्रणाम कर देते थे। Advaita Acharya saw himself as junior to Lord Chaitanya. अद्वैत आचार्य अपने आप को भगवान चैतन्य महाप्रभु से कनिष्ठ समझते थे। And as a form of the Lord, it's a fact. Krishna, Lord Chaitanya, is the original. Advaita is an expansion. तो अगर भगवान के रूप से देखें तो ये सत्य है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं और अद्वैत आचार्य जो हैं वो उनके एक्सपेंशन है। And expansion. Vistar, hey. Okay. Oh, it's all right. Bahut acha anubhava hai. Bahut acha. I know because I basically understand, but yeah, so I know when there's a good translator. Yes, okay, so Advaita Acharya, you know, he would meet Lord Chaitanya fairly regularly, and he'd want to bow down first, but he was old. तो अद्वैत आचार्य हमेशा प्रयास करते थे कि वो पहले चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करें, लेकिन चैतन्य महाप्रभु पहले कर लेते थे। Because Advaita, he was what? Not, you wouldn't say Purani, would you? That's too old, right? Purani, that's ancient. Yes, okay, anyway. He was ancient. तो अद्वैत आचार्य बड़े थे उम्र में चैतन्य महाप्रभु से। But the Lord Chaitanya was younger, so he was much quicker. He just bowed down. First, he bowed down. तो चैतन्य महाप्रभु क्योंकि ज्यादा युवक थे तो वो पहले ही झुक जाते थे, पहले ही प्रणाम कर लेते थे अद्वैत आचार्य को। I won't go through the whole story. तो मैं सारी कथा में नहीं जाऊंगा। But it's a really quite an amazing story. और ये बहुत ही अच्छा संवाद है। Okay. So Advaita Acharya acted like he had become a Mayavadi. तो इसलिए अद्वैत आचार्य ऐसा भूमिका निभाते हैं कि वो एक मायावादी हैं। And Lord Chaitanya heard it and he thought, no, not Advaita Acharya, he'd never do that. तो जब चैतन्य महाप्रभु को ऐसा सुनने में आया तो चैतन्य महाप्रभु को विश्वास नहीं हो रहा था कि अद्वैत आचार्य ऐसा कैसे कर सकते हैं। But then he heard again and again people were telling him. पर बार-बार जब उन्होंने सुना कि लोग ऐसा कह रहे हैं, so he came to see Advaita Acharya. तो वो अद्वैत आचार्य से मिलने के लिए आए। And Advaita Acharya told him, he said, have you heard the good news?
और अद्वैत आचार्य ने बोला कि क्या आपने ये सुखद समाचार सुना है? We're all God. हम सब भगवान हैं. Which between the two of them and Lord Nityananda was there, it's true. तो अगर हम इसको देखें तो अद्वैत आचार्य और चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु वास्तविकता में तीनों भगवान हैं. But Advaita Acharya really got carried away. पर अद्वैत आचार्य कुछ आगे ही बढ़ गए. The dog is God, the bird is God. वो जो कुत्ता है वो भी भगवान है, जो पक्षी है वो भी भगवान है. And Lord Chaitanya got so transcendently angry, he physically attacked him. तो चैतन्य महाप्रभु हालांकि आध्यात्मिक रूप से, लेकिन वो बहुत ही गुस्से में आ गए और उन्होंने अद्वैत आचार्य के ऊपर प्रहार किया शारीरिक रूप से. So Lord Chaitanya is bashing him, punching him. तो चैतन्य महाप्रभु उनको घूसे मार रहे हैं, उनको थप्पड़ मार रहे हैं. And Advaita Acharya is just going, Hari Bol, Hari Bol. अद्वैत आचार्य ऐसे हरि बोल कर रहे हैं. And he told Lord Chaitanya, this is the best day of my life. और वो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन है. You finally accepted me as your subordinate. तो आज आपने मुझे अपने एक अनुयायी के रूप में ग्रहण कर लिया. Junior, yeah. Then, another interesting place where this is emphasized is the story of Ishvara Puri, Ramachandra Puri with Madhavendra Puri. तो एक और स्थान पे जहाँ पे इस बात के पर जोड़ दिया गया है ईश्वरपुरी, रामचंद्रपुरी और माधवेंद्रपुरी के प्रसंग में. In Madhavendra Puri's last days, he was incapacitated. तो माधवेंद्रपुरी अपने अंतिम के दिनों में सैया पे लेटे रहते थे. And Ishvara Puri, one of his disciples, came and he saw this and he decided, oh, I must serve and help my spiritual master physically. और जब ईश्वरपुरी उनके पास आए और उन्होंने माधवेंद्रपुरी की ऐसी स्थिति देखी तो उन्होंने विचार किया कि मुझे शारीरिक रूप से अपने गुरु की सेवा करनी है. So Chaitanya Charitamrita describes he was even cleaning up Madhavendra Puri's stool and urine with his own hands. तो चैतन्य चरितामृत में इसका वर्णन आता है कि कैसे वो माधवेंद्र पुरी का मल मूत्र भी साफ करते थे अपने खुद के हाथों से. And he was not thinking that, oh, this is so dirty, why do I have to do it? और वो ऐसा नहीं सोचते थे कि अरे ये तो बहुत निकृष्ट है, बहुत गंदा है, मुझे ऐसा करना पड़ रहा है. He was in ecstasy serving his spiritual master. तो वो बहुत ही खुश थे, बहुत ही आनंदित थे अपने गुरु की सेवा करके. And he was just always, he was singing kirtan and bhajan. और वो हमेशा कीर्तन करते रहते थे, भजन गाते रहते थे. So then Madhavendra Puri, his spiritual master, blessed him. तो माधवेंद्र पुरी जो कि उनके गुरु थे, उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया. May you become a great devotee and a great lover of God. कि आप एक बहुत ही महान भक्त बने और एक बहुत ही महान प्रेमी बने भगवान के. And Ishvara Puri became such a great devotee that when Lord Chaitanya met him, he was so impressed. He felt, I must accept him as my spiritual master. तो ईश्वरपुरी इतने महान भक्त बन गए कि जब चैतन्य महाप्रभु उनसे मिले तो इतने प्रभावित हुए कि वो उनको अपने गुरु के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए. But then there was Ramachandra Puri, who was also a disciple of Madhavendra Puri. तो एक और शिष्य थे माधवेंद्र पुरी के जिनका नाम था रामचंद्र पुरी. And he also came to see his spiritual master in his last days. तो वो भी आखिरी के दिनों में अपने गुरु के दर्शन करने के लिए आए. And Madhavendra Puri was feeling great separation from Krishna. माधवेंद्र पुरी कृष्ण से बहुत ही विलग अनुभव कर रहे थे. And he was lamenting, Ai Dina Dayadranath, hey, Maturanath Kadavalokyase.
he was lamenting that, oh my Lord, I have failed to achieve Mathura. और वो ऐसी प्रार्थना, करुणामयी प्रार्थना कर रहे थे भगवान से कि मैं मथुरा को पाने में असफल रहा। So, Kim Karom Yaham, at this last stage of my life, what can I do? तो अपने जीवन के इन अंतिम क्षणों में मैं क्या कर सकता हूँ? So Ramachandra Puri heard him lamenting transcendentally like this. तो रामचंद्र पुरी ने जब इस प्रकार से देखा, सुना कि कैसे माधवेंद्र पुरी जो है वो भगवान से ऐसी करुणा में प्रार्थना कर रहे हैं, And he thought, I should also serve my guru. What shall I do? I know. I'll give him some good advice. तो उन्होंने सोचा कि मैं भी अपने गुरु की सेवा करता हूँ। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, मैं अपने गुरु को कुछ अच्छे विचार देता हूँ। So he said to Madhavendra Puri, why are you lamenting like an old lady? तो उन्होंने ये सुझाव दिया, माधवेंद्र पुरी को बोला कि क्यों आप एक बूढ़ी महिला की तरह विलाप कर रहे हो? With respects to any old ladies here. तो यहाँ पे कोई बूढ़ी माता जी हैं, तो उनके प्रति हमारा He said, actually, you shouldn't be emotional like this. You should just fix your mind on Brahman and be detached. तो कह रहे, वो रामचंद्र पुरी माधवेंद्र पुरी को कह रहे हैं कि आपको इस तरह से विलाप नहीं करना चाहिए, आपको ब्रह्मांड के ऊपर विचार करना चाहिए। Yeah, Brahman, like the impersonal Brahman. जैसे कि निर्विशेषवादी ब्राह्मण होते हैं। And when Madhavendra Puri heard this, he became very disturbed. तो जब माधवेंद्र पुरी ने ये सुना, तो बहुत ही उद्विग्न हो गए। He told them, just get out of here. और उनको बोला, भाग जाओ यहाँ से। If I see you at the moment I leave my body, I don't know where I'll go. अगर मैंने मृत्यु के अंतिम क्षण में अगर तुमको देख लिया, तो मुझे पता नहीं मैं कहाँ जाऊंगा, कौन से लोक में जाऊंगा। So Srila Krishnadas Kaviraj Goswami says these two, Ishvara Puri, Ramachandra Puri, are just like very good examples of getting the blessings of a great soul, or like being rejected by a great soul. कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में ये बताते हैं कि ये बहुत सुंदर उदाहरण है दो, कि कैसे एक शिष्य को गुरु से आशीर्वाद मिल सकता है, और किस प्रकार से एक शिष्य जो है वो शिष्य गुरु की अवहेलना को प्राप्त कर सकता है। So when we're juniors and we're relating with seniors, particularly those who are very senior, we really have to be very careful. तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम कनिष्ठ अवस्था में हैं, तो जो हमसे वरिष्ठ भक्त हैं, जब हम उनका संग कर रहे हैं, तो बहुत ही सावधानी पूर्वक उनसे मिलें। I can tell you a little ISKCON story. तो मैं आपको एक छोटी सी ISKCON की कहानी बता रहा हूँ। In 1972, the devotees in Amsterdam, Holland, they were installing Radha Krishna deities in the temple. तो ये 1972 की बात है। एम्स्टर्डम हॉलैंड में जो भक्त हैं, वो राधा कृष्ण के विग्रहों की स्थापना कर रहे थे एक मंदिर में। And Srila Prabhupada was there. श्रील प्रभुपाद जी वहीं उपस्थित थे। And the devotees, they didn't know how to do these things, so they were making many mistakes. तो क्योंकि भक्तों को पता नहीं था कि किस प्रकार से अर्च विग्रहों की स्थापना होती है, तो कई सारी गलतियां कर रहे थे। And Prabhupada, step by step, was becoming more angry. और प्रभुपाद जी धीरे धीरे बहुत ही उद्वेगित हो रहे थे, गुस्से में आ रहे थे। Actually, those who served Prabhupada personally for some time, they told me one thing. तो जिन भक्तों ने प्रभुपाद जी की सेवा करी है, उन्होंने मुझे एक बात बताई। If you really did something stupid, Prabhupada might shout at you. अगर आप कुछ बहुत गलत करते हैं, तो प्रभुपाद हो सकता है आप पे बहुत चिल्लाएं। But if Prabhupada got really angry with you, he might not say anything.
लेकिन अगर प्रभुपाद जी वास्तविकता में आपसे गुस्से में हैं तो वो शायद कुछ बोलेंगे ही नहीं। So these devotees were making many mistakes. तो ये भक्त बहुत सारी गलतियां कर रहे थे। And Prabhupada is saying, no, don't do that, do this. और प्रभुपाद जी उनको कह रहे थे कि अरे ये मत करो, ये करो। And don't do that, do something else. और वो मत करो, कुछ और करो। So finally it was time for the Havan, the fire yajna. तो आखिरी में जो समय आया यज्ञ का, So they had like a Havan kund constructed with some bricks and things. तो वहाँ पे एक हवन कुंड का निर्माण हुआ था ईंटों से और अन्य पदार्थों से। But there was no decoration there. पर वहाँ पे किसी प्रकार का कोई सजावट नहीं था। Normally they put like whole fruits, whole vegetables sometimes. तो हम देखते हैं कि जब यज्ञ कुंड होता है तो उस पे फल रखते हैं, सब्जियां रखते हैं, पूर्ण रूप से ऐसा कटा हुआ नहीं, पूरा पूरा साबुत। So Prabhupada called the temple president. तो प्रभुपाद जी ने मंदिर के अध्यक्ष को बुलाया। And Prabhupada said, where is the fruit? और प्रभुपाद जी ने उनसे पूछा कि फल कहाँ है? And temple president thought, fruit, fruit. Prabhupada wants fruit. और जो मंदिर के अध्यक्ष थे वो सोचने लग गए कि फल, फल, प्रभुपाद जी को फल चाहिए। He ran into the kitchen. तो भाग के किचन में गए। Prabhupada wants fruit. Where's the fruit? और वो बोलने लगे प्रभुपाद जी को फल चाहिए, कहाँ है फल? So they found some fruit. तो उनको कुछ फल मिल गए। And they cut it up very quickly. और जल्दी से उसको काटा, उस फल को। The quickest fruit salad in ISKCON history. इस्कॉन के पूरे इतिहास में सबसे जल्दी अगर फल काटा गया होगा। And temple president came up with nice big bowl of fruit salad. Here, Prabhupada, here's the fruit. और जो मंदिर के अध्यक्ष थे वो पूरा भगोने में भर के फल, कटे हुए फल लेके आए और प्रभुपाद जी को देके बोला प्रभुपाद जी ये आपके लिए फल हैं। And Prabhupada just looked at the fruit salad. और प्रभुपाद जी ने वो फल का जो सलाद था उसकी तरफ देखा। And he didn't say anything. और उन्होंने कुछ बोला नहीं। He just looked to the other side. और प्रभुपाद जी दूसरी तरफ देखने लग गए। Standing on the other side was a young hippie. तो दूसरे साइड में एक बहुत ही युवक हिप्पी खड़ा था। He was not a devotee, not like a real devotee, but a little bit devotee. तो वो एक बहुत पुराना, बहुत अच्छा भक्त नहीं था, थोड़ा थोड़ा भक्त था वो। He had japa beads. तो उसके हाथों में जप माला थी। He's standing right there watching Prabhupada. और वो वहीं पे खड़ा था, प्रभुपाद जी को देख रहा था, chanting on his beads. अपने माला पे जप करता हुआ। And then he saw this fruit salad thing happen. और उसने देखा कि ये फल वाला जो प्रसंग है वो हुआ। And Prabhupada looked in his direction. और प्रभुपाद जी उसकी दिशा में देखे। And the young hippie boy leaned over to Prabhupada. और वो जो युवक हिप्पी था वो प्रभुपाद की तरफ झुका। And he said, Srila Prabhupada, just chant Hare Krishna. और उसने प्रभुपाद जी को बोला कि प्रभुपाद जी आप नाम जप करिए। This is an example of a junior doing something he should not do with a senior. तो ये एक उदाहरण है ये समझने के लिए कि कैसे एक कनिष्ठ भक्त को अपने से वरिष्ठ भक्त के प्रति ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। I think he was like pre-Kanishta, but anyway. तो शायद कनिष्ठ से भी नीचे था। So this young boy leans over and speaks to Prabhupada. तो ये युवक जो था वो प्रभुपाद की तरफ झुक के प्रभुपाद को कहता है। And Prabhupada looked up and looked at him. और प्रभुपाद उसकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं Like, who are you? ऐसे जैसे प्रभुपाद कह रहे हो कि तुम कौन होते हो मुझे बोलने। And then Prabhupada picked up his beads और and फिर प्रभुपाद started chanting Hare Krishna. अपनी जपमाला लेते हैं और हरे कृष्णा जप शुरू कर देते हैं। Because you can take gold from a dirty place. क्योंकि आप सोने को एक गंदे स्थान से भी ले सकते हैं। Anyway, that's a good example. You get the idea of what a junior should definitely not do
with a senior, particularly someone who's really senior. तो ये एक उदाहरण है ये समझने के लिए कि कैसे एक कनिष्ठ भक्त को एक वरिष्ठ भक्त के प्रति व्यवहार नहीं करना चाहिए, वो भक्त जो कि वाकई में बहुत वरिष्ठ है। And of course there are many more examples of this sort of thing. तो इसके और भी बड़े सारे उदाहरण हैं। Durvasa with Maharaj Ambarish. दुर्वासा मुनि महाराज अम्बरीश के प्रति। Durvasa spiritually is junior to Ambarish, who's very great devotee. तो जो दुर्वासा मुनि है वो आध्यात्मिक रूप से कनिष्ठ हैं अम्बरीश महाराज से, जो कि आध्यात्मिक स्तर पे बहुत ऊंचे स्तर पे हैं। Chapal Gopal, if you know that story with Srivas Thakur. अगर आपने चप्पल गोपाल की कहानी सुनी हो, कथा सुनी हो, श्रीवास ठाकुर, He put some unclean things outside the front door of Srivas Thakur's house. तो वो कुछ अपवित्र चीजें श्रीवास ठाकुर के घर के बाहर रख देते हैं। And as a result he got leprosy. और उसके कारण उनको कुष्ठ का रोग हो जाता है। And in Chaitanya Charitamrita's interesting story of Vallabhacharya when he came to Jagannath Puri. और चैतन्य चरितामृत में बहुत रुचिकर प्रसंग है कि वल्लभाचार्य जब जगन्नाथपुरी आते हैं, He tried to impress Lord Chaitanya with his knowledge. तो वो चैतन्य महाप्रभु को अपने ज्ञान से प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। So let me just check here. So he said, first of all, one time he said, I've written a commentary on the Bhagavatam. Can I read it to you? तो वो महाप्रभु को बोलते हैं कि मैंने भागवतम के ऊपर एक टीका लिखी है, क्या मैं आपके लिए पढ़ सकता हूँ? And Lord Chaitanya looked at him kind of like, who are you? चैतन्य महाप्रभु उनकी तरफ देखते हैं कि तुम कौन होते हो टीका लिखने वाले? Actually, Lord Chaitanya knew him already, and he knew Vallabhacharya is like a proud Vedic scholar, but he's not really a very advanced devotee. तो चैतन्य महाप्रभु पहले से जानते थे कि जो वल्लभाचार्य हैं उनको बहुत ही मद है एक वैदिक स्कॉलर होने का, कि ज्ञानी होने का। So Lord Chaitanya said, I don't understand Srimad Bhagavatam. चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मुझे श्रीमद् भागवतम समझ में नहीं आती। Yeah, I just sit here chanting Hare Krishna. मैं बस हरे कृष्णा जप करता रहता हूँ। And although I chant day and night, I can't finish my rounds. और हालांकि मैं दिन रात जप करता हूँ, फिर भी मेरी माला पूरी नहीं होती है। So Vallabhacharya came and, in a pretentious way, trying to show off, he asked Lord Chaitanya, hear my explanation of the chanting of Hare Krishna. तो वल्लभाचार्य दिखावे के लिए वो चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं कि यहाँ पे नाम जप के ऊपर मेरा व्याख्यान है। One time he said, you know that Krishna is the Purush. He's like the husband. तो एक बार उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को कहा कि जो कृष्ण है वो पुरुष है, वो पति के समान है। And Radharani, she's like sort of like the wife or something like that. और राधा रानी जो है वो कुछ ऐसा पत्नी के समान है। And we as jivas, we're also in that position. और हम एक जीव के नाते हम भी उसी स्थिति में हैं। He's the Purusha and we are like females. कि वो पुरुष हैं और हम प्रकृति हैं, हम स्त्री हैं। And trying to be intelligent, he said, you know, traditionally the wife does not address her husband by name. और वो अपनी बुद्धिमत्ता प्रकट करने के लिए ऐसा कहते हैं कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से एक पत्नी जो है वो अपने पति का नाम नहीं लेती है। So it is wrong for us to chant Hare Krishna. तो इसीलिए हमारा ये हरिनाम जप करना ये गलत है। Probably what Lord Chaitanya thought he'd like to sort of, punch him or something. तो शायद चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा सोचा होगा कि मैं इसके चेहरे पे घूसा मार दूं। Anyway, he just
chastised him and sent him away. तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको वहां से जाने के लिए बोला. Anyway, there was a number of incidents like that where Lord Chaitanya just didn't want to deal with him. तो ऐसे कई प्रसंग थे जिसमें चैतन्य महाप्रभु उनके साथ किसी भी प्रकार का बर्ताव नहीं करना चाहते थे. And Chaitanya Charitamrita says that when Vallabha was there with the associates of Lord Chaitanya, he looked like a grey duck in the company of a group of beautiful white swans. तो जब वल्लभाचार्य महाप्रभु के पार्षदों के बीच में होते थे तो ऐसा लगता था जैसे कि बहुत सारे सुंदर हंसों के बीच में वो एक बत्तख के समान. Buttock. Yeah, duck. You know. Anyway, you know what a duck is, right? You know, stupid-looking creature, just quacks. तो आप जानते हैं कि जो बत्तख होता है वो कैसा होता है, बिल्कुल ही अभद्र दिखने वाला है. Anyway, let's just say, I mean, there are many things we can say about this, but about juniors with seniors, but let's just say a few words about equals. तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि वो कनिष्ठ और वरिष्ठ के बीच का संबंध कैसा होना चाहिए उसके बारे में बोला जा सकता है, लेकिन अब आइए हम समान भक्तों के विषय में चर्चा करते हैं. So the basic idea is to associate and serve together like friends. तो जो इसके पीछे जो मूल उद्देश्य है वो ये समझना है कि हमें उनके साथ एक मित्रता का व्यवहार करना चाहिए. And we all know that Prabhupada said in his last days that your love for me will be shown how you cooperate together after I'm gone. तो हम सब जानते हैं कि कैसे प्रभुपाद जी ने अपने आखिरी के दिनों में ये संदेश दिया कि आपका मेरे प्रति जो प्रेम है वो कैसे प्रदर्शित होगा कि आप आपस में परस्पर में कैसे एक दूसरे के साथ मेल मिलाप रखते हैं. So devotees who've been devotees like approximately as long as you. तो ऐसा जैसे कि भक्त हैं वो उनको उतना समय हो गया है जैसे कि आप सबको भक्ति में जितना समय हो गया है. Right. And you should associate with them as friends, discuss Krishna consciousness together, exchange realizations. तो आपको उनके साथ मित्रता का भाव रखना चाहिए, उनके साथ आपको चर्चा करनी चाहिए कृष्ण के विषय में और अपने जो रियलाइजेशन से अपने जो अनुभव है साक्षात्कार है उनको आपस में चर्चा करना चाहिए. One thing we can know is there are different types of friends. तो एक चीज जो हमें जानना चाहिए कि कई प्रकार के मित्र होते हैं. Like we know about the Vatsalya rasa where someone feels they're the parent of Krishna. तो हम सब जानते हैं वात्सल्य रस के बारे में कि कैसे कुछ भक्त जो है वो ये विचार करते हैं कि वो कृष्ण के माता पिता के समान हैं. So how does Krishna see them, like in terms of rasa? तो कैसे कृष्ण उनको कैसे देखते हैं? रस के अगर प्रसंग में बात करें तो कृष्ण कैसे उनको देखते हैं? He doesn't see them in Vatsalya rasa. तो वो उनको वात्सल्य रस में नहीं देखते. He sees his own children in Vatsalya rasa. वो अपने बच्चों के समान उनको देखते हैं वात्सल्य रस में. So Krishna sees his parents as senior friends. तो कृष्ण अपने माता पिता को अपने वरिष्ठ मित्र के रूप में देखते हैं. Yeah. His older brother Balaram, he also sees him senior friend. और अपने बड़े भाई बलराम जी को भी वो एक अपने वरिष्ठ मित्र के रूप में देखते हैं. And then those who really are equal with you more or less, it's just sort of what? Mitra. It's like mitra would be the word. Yeah. तो और जो आपके समान के भक्त हैं वो मित्र के समान है आपके लिए. Junior. You can have junior friends
that you are senior to them, but actually the relationship is friendly. It's not exactly like senior to junior. तो आपकी कनिष्ठ मित्रता भी हो सकती है, तो ऐसा नहीं है कि वरिष्ठ और कनिष्ठ का संबंध है, हम उनके साथ एक मित्रता का भाव रख सकते हैं। Prabhupada talks about bandhu, who's like general friend. तो प्रभुपाद जी चर्चा करते हैं बंधु के विषय में, जो कि एक सामान्य मित्र के समान है। आप मेरा बंधु है। आप मेरे, you are my friend, आप मेरे बंधु हैं। Once in Vrindavan, my knowledge of Hindi is sort of questionable. I said to one of the bridge buses who I've known many years, I said, "Aap mera purani bandhu hai." तो महाराज बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने अपने एक ब्रजवासी जिनको वो बहुत समय से जानते हैं, उनको ऐसा बोला कि आप मेरे बंधु हैं, पुराने बंधु हैं। And he looked at me like, "What? What are you saying?" तो वो महाराज की तरफ ऐसे देखने लगे कि अरे आप ये क्या कह रहे हैं? That I am your ancient friend. मैं आपका पौराणिक मित्र हूँ। Then suhrit means, well, mitra means a friend on the same level, same likes, same dislikes. तो मित्र का मतलब है कि समान स्तर पे हमारी क्या चीजें हमें अच्छी लगती हैं, क्या चीजें हमें बुरी लगती हैं, एक समान जैसा होगा। Surit is more like very close friend, even best friend. तो सुहृद का मतलब है कि हमारा सबसे अच्छा मित्र, हमारा सबसे करीबी मित्र। Krishna has 4 categories of friends. कृष्ण के 4 प्रकार के मित्र हैं। Surit, Sakha, Priya Sakha, and Priya Narma Sakha. Anyway, yeah. तो 4 श्रेणी के मित्र हैं, सुहृद, सखा, प्रिय सखा और आखिरी Priyanama Sakha. प्रिय नाम सखा। That's the closest, like Subal, Sridham, like जो that. भगवान के सबसे करीबी मित्र हैं, जैसे सुबल, श्रीदाम। And then dealings of seniors with juniors. और फिर जो वरिष्ठ हैं, उनका कनिष्ठों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। So the basic mood, you could even say, in a sense, the rasa is parental. तो जो सामान्य भाव है, ऐसा जो वरिष्ठ और कनिष्ठ के बीच में, वो ऐसा होता है जैसे एक वात्सल्य का भाव, माता पिता का भाव जो जैसा बच्चों के प्रति होता है, उस प्रकार का। Yeah, that parental rasa where you are protecting the junior. तो जो वात्सल्य रस है कि कैसे माता पिता अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, वैसे वरिष्ठ अपने से कनिष्ठों का ध्यान रखते हैं। Regularly giving guidance. उनको नियमित रूप से सुझाव देते हैं, दिशा निर्देशन देते हैं। Yes, like this. So there's a nice story about Srila Prabhupada. तो एक बहुत ही सुंदर कथा है श्रील प्रभुपाद जी के विषय में। This one was told to me by Trivikram Maharaj. तो ये मुझे त्रिविक्रम महाराज ने बताया था। Who had a lot of association with Prabhupada. उनको बहुत प्रभुपाद जी का संग मिला था। So he was, Prabhupada was in Vrindavan. श्रील प्रभुपाद जी उस समय वृंदावन में थे। And Prabhupada's masseur got sick and couldn't massage Prabhupada. तो जो भक्त प्रभुपाद जी का मसाज करते थे, उनकी तबीयत खराब हो गई थी और वो प्रभुपाद जी का मसाज नहीं कर पाए। So Trivikram Maharaj volunteered, "I'll massage you." तो त्रिविक्रम महाराज ने आगे आके कहा कि मैं प्रभुपाद जी का मसाज He करूंगा। didn't really know what to do. तो हालांकि उनको पता नहीं था क्या करना होता है, But anyway, he really got into it. लेकिन वो प्रभुपाद जी का मसाज करने लगे। Twice a day, massaging Prabhupada strongly. तो दिन में 2 बार प्रभुपाद जी का बहुत ही शक्ति के साथ वो मसाज कर रहे थे। Next day, Prabhupada said, "You know, in 1 week, I am going to America."
तो प्रभुपाद जी ने अगले दिन को बोला कि एक सप्ताह के अंदर मैं अमेरिका जा रहा हूँ। And Trivikram Maharaj thought, oh no, I'm going to lose Prabhupada's association. त्रिविक्रम महाराज को लगा कि वो मुझे प्रभुपाद जी का संग नहीं मिल पाएगा। So Trivikram Maharaj said, Prabhupada, I think I must come with you. त्रिविक्रम महाराज ने प्रभुपाद जी को कहा कि प्रभुपाद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी आपके साथ आना चाहिए। Because you need someone to do your massage. क्योंकि आपको कोई चाहिए जो कि आपका मसाज कर सके। Now I've learned the massage, so I can go with you. I'll massage you, Prabhupada. तो मैंने आपका मसाज करना सीख लिया है, तो इसीलिए मैं आपके साथ जाऊंगा। And Prabhupada said, no, it's all right. Upendra is there. He knows massage. तो प्रभुपाद जी ने तो बोला नहीं, जरूरत नहीं है, उपेंद्र है वहाँ पे, वो मेरा मसाज कर लेंगे। So every day for the rest of the week, Trivikram Maharaj is massaging Prabhupada, and every day he said, Prabhupada, you know, I really do think I should come with you. तो उसके बाद से हर दिन पूरे सप्ताह त्रिविक्रम महाराज प्रभुपाद जी को जब मसाज करते थे तो कहते थे कि प्रभुपाद मुझे लगता है कि मुझे आपके साथ चलना चाहिए। Finally came the last day. तो आखिरी दिन आ गया। Trivikram Maharaj gave his best massage. त्रिविक्रम महाराज ने अपने जो सबसे बढ़िया मसाज हो सकता था वो दिया प्रभुपाद जी को। And he said to Prabhupada, you know, Srila Prabhupada, I really think I really need to come with you so you get a proper massage. त्रिविक्रम महाराज ने प्रभुपाद जी को बोला, प्रभुपाद मुझे सचमुच में ऐसा लगता है कि मुझे आपके साथ आना चाहिए और आपका मसाज करते रहना चाहिए। So Prabhupada, as he did every day, he just said, no, it's all right. Upendra is there, he can do the massage. तो प्रभुपाद जैसा हर दिन उनको बोलते थे, नहीं जरूरत नहीं है, वहाँ पे उपेंद्र है, वो कर लेंगे मसाज। Trivikram Maharaj didn't know what to say. त्रिविक्रम महाराज समझ नहीं पा रहे थे क्या बोले प्रभुपाद जी को। So he said, Srila Prabhupada, is Upendra a nice boy? तो उन्होंने प्रभुपाद जी को बोला कि प्रभुपाद उपेंद्र क्या अच्छा लड़का नहीं है? And Srila Prabhupada said, yes, Upendra is a very nice boy. प्रभुपाद जी ने बोला हाँ वो एक बहुत अच्छा लड़का है, but not as nice as you. लेकिन तुम्हारे इतना अच्छा नहीं है। And when Prabhupada said that, then Trivikram Maharaj understood, Prabhupada loves me. तो जब प्रभुपाद जी ने ऐसा बोला त्रिविक्रम महाराज को, त्रिविक्रम महाराज को लगा कि प्रभुपाद जी उनसे कितना प्रेम करते हैं। So if you are a senior, particularly if you're in charge of some junior people, तो अगर आप वरिष्ठ हैं और खास करके जब आपके नीचे आपके अधीनता में कुछ कनिष्ठ भक्त हैं, there are two questions. First questions you should ask yourself. तो दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न जो कि आपको अपने आप से पूछना चाहिए, do you love your juniors? क्या आप अपने कनिष्ठों से प्रेम करते हैं? And second question, do your juniors love you? क्योंकि आपके जो कनिष्ठ भक्त हैं वो आपसे प्यार करते हैं। Because if you're the senior, you don't want to be just like the boss. तो क्योंकि अगर आप सीनियर हैं, आप वरिष्ठ हैं, तो आपको ऐसा स्वामी की तरह व्यवहार नहीं करना। What's boss in Hindi? बॉस, मालिक। Oh, Malik. May Malik hum. Or tum. What would you say? Chota. Why? Something like that. Yeah, and if if your answer to the first question is yes, I love my juniors. तो अगर आपके पहले प्रश्न का उत्तर ये है कि आप अपने से जो कनिष्ठ भक्त हैं उनसे प्यार करते हैं, then the next question is, how do you show your love? तो अगला प्रश्न ये है कि कैसे आप अपने उस प्रेम को प्रकट करते हैं। Anyway, if you are in such a situation, you're in charge of some devotees, you can just think about that yourself. तो अगर आप ऐसी स्थिति में हैं कि आपके अधीन कुछ कनिष्ठ भक्त हैं, तो आप इस प्रकार से विचार जरूर कर सकते हैं।
Yeah, and Prabhupada, there's one very famous letter of Prabhupada's where he talks about the subject of being a senior devotee who is like directing, managing junior devotees. तो प्रभुपाद जी अपने एक पत्र में इसके विषय में बताते हैं कि कैसे अगर कोई वरिष्ठ भक्त है और उसके अधीन कुछ भक्त हैं, उनका वो प्रबंधन कर रहे हैं, तो उनको कैसे करना चाहिए. So Prabhupada says, to paraphrase, that the future of this movement is very bright. तो प्रभुपाद जी ऐसा कह रहे हैं, मैं उसको अपने शब्दों में बता रहा हूँ कि इस संस्था का जो भविष्य है वो बहुत ही उज्जवल है. Ujjwal, yes. As long as the managers or the seniors are very vigilant to see everyone's chanting 16 rounds. तब तक जब तक कि जो प्रबंधक हैं, जो वरिष्ठ भक्त हैं, वो ये ध्यानपूर्वक देख रहे हैं कि जो सारे भक्त हैं वो 16 माला का जप कर रहे हैं. Everyone's getting up before 4 in the morning. और हर कोई सुबह 4 बजे से पहले उठ रहा है. 4 बजे, ठीक है, ठीक है. Okay, yeah, right. And attending Mangal Arati. और मंगल आरती में उपस्थित हो रहे हैं. Then Prabhupada says, the leaders must be careful not to kill the spirit of enthusiastic service. तो ये एक जो नेतृत्व, जो नेता है, उनको ध्यान रखना चाहिए कि भक्तों के हृदय में जो उत्साह है उसको वो ना मारे. Right. Because that spirit is individual, spontaneous and voluntary. क्योंकि ये जो भाव है वो व्यक्तिगत है और ये उस व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है, उसके ऊपर. And voluntary. और ये बिल्कुल ही निष्काम भाव से, वो अपने आप से इसके प्रति आगे आता है. बिल्कुल ठीक, अनुवादक है. Yes. Okay. So the leaders should always try to generate an atmosphere of fresh challenge. तो जो नेता है उसका कर्तव्य है कि वो ऐसी स्थितियां उत्पन्न करे जहां पे लोगों को नया काम करने के लिए उत्साह मिले. So that the devotees will be enthusiastic to rise and meet that challenge. तो इससे क्या होगा कि भक्तों के अंदर उत्साह आएगा और वो इन कार्यों को करने के प्रति प्रेरित होंगे. Then Prabhupada says, that is the art of management. तो ये एक प्रबंधन की कला है. To bring out spontaneous loving spirit of service for Krishna. तो भगवान के प्रति जो स्वयं जागरूक प्रेम का भाव है उसको उत्पन्न करना. So anyway, there's a few thoughts on these subjects. तो ये कुछ विचार है इस विषय के ऊपर. We have a few minutes. Anyone have a comment, question? तो हमारे पास कुछ समय है. आप में से किसी का कोई टिप्पणी है, कोई प्रश्न है? You want to ask? Yes. Just a sec. Could he try and translate, please? My assistant, this is Anukul Krishna Prabhu. And have you translated classes before? Oh, he has translated before, but not for me, so let us see if he, how he is as a translator. We'll do translator prayers. Okay, first question, please, loud and clear. Yes, Maharaj. First of all, thank you for a sublime and ecstatic class as always. Maharaj, about this topic about submissive inquiry, even earlier Nishanga Maharaj was talking about always hearing and wanting to hear. And I have this dichotomy, this issue that comes up. And it's about sometimes I have a question, I'm pondering something, I'm listening to a lecture of yours on tape,
or reading Prabhupada's books or listening to a lecture from Prabhupada. And then a question comes up later, and then afterwards I want to ask Maharaj that question, and then after some time, listening to another lecture or reading another book, the answer kind of comes, Okay. And then, so when I'm in a situation like this, I wonder, I don't want to kind of manufacture a question, so I'm left with this feeling that often I kind of find that I get my answer from you indirectly, and I wonder if I'm missing out on an important exchange between myself and you. Yes, so I wanted to know if that's on the same level, that type of submissive inquiry where I'm getting the answer indirectly. Yes. Okay. Mesa Master Hall. So, Anubhav, Vipaya. Anubhav. To just briefly translate his question. हरे कृष्ण। प्रभु जी बोल रहे हैं कि वो बहुत सारा किताब पढ़ते हैं और उन्होंने लेक्चर सुना है और तो उसमें उनको बहुत कुछ डाउट्स आते हैं। No, a question. No, just tell them. तो जैसे प्रवचन में बताया है कि हमें विनम्रता पूर्वक प्रश्न पूछना चाहिए, तो किस प्रकार से हम ये विनम्रता को उत्पन्न कर सकते हैं। तो जब ये इस प्रकार के प्रश्न हमें प्रवचन सुनते हैं तो प्रश्न आता है, तो हमें अगले प्रवचन में इसका उत्तर मिल जाता है। तो फिर ऐसा लगता है कि आपके साथ जो ये प्रश्न पूछने की जो श्रृंखला है, इसको हम मिस कर रहे हैं। ठीक है? Okay. Yeah. Okay, it's an interesting question. यह बहुत ही रुचिकर प्रश्न है। The thing is, sometimes I think everyone's had some experience of that sort of thing happening. तो हम सभी के साथ इस प्रकार के एक अनुभव होता है। But generally, at least in my experience and what others have told me, it's not that it happens every time. तो सामान्यतः मेरे अनुभव से ऐसा नहीं है कि हमेशा इस प्रकार होता है। It happens sometimes. कभी-कभी ऐसा होता है। Maybe it happens more with you. I mean, हो सकता है आपके साथ बार-बार हो सकता है. Yeah. So, but what I'd say as a general rule, well, as a general rule, is according to a saying. तो सामान्य नियम इसका यह है, जो एक जैसा कहा जाता है। The saying is, the only silly question is the one that is not asked. तो इस प्रकार कहा जाता है कि एक मूर्खतापूर्ण प्रश्न वह है जिसको पूछा नहीं जाता है। So therefore, as a general rule, I would suggest, or just actually tell you, that best to ask the questions. तो सामान्य नियम के अनुसार मैं आपको सलाह दूंगा कि सबसे अच्छा यही है कि हमें प्रश्न पूछना चाहिए। Because, sometime Krishna may decide he doesn't want to give you the answer. क्योंकि कभी-कभी कृष्ण चाहते हैं और आपको वह उत्तर नहीं देते हैं। We should never think that, whatever I want, Krishna will do it for me. तो ऐसा नहीं है कि हम जो भी चाहते हैं कृष्ण हमको दे देते हैं। So I would recommend, or even just say, that you should ask. Yeah. तो मैं
आपको सलाह दूंगा कि आपको कुछ भी प्रश्न है आपको पूछना चाहिए। Nrsimha Maharaj was talking about, he was answering the devotee's question about which lecture should I listen to, or who should I listen to. तो नरसिंह महाराज तो उत्तर दे रहे थे कृष्ण का कि किसका लेक्चर हमें सुनना चाहिए और किस प्रकार के प्रवचन हमें सुनना चाहिए। And he gave very nice answer. और उन्होंने बहुत ही अच्छा उत्तर दिया। But it reminded me of one thing that I heard Srila Prabhupada say. और मुझे याद आया कि श्रील प्रभुपाद ने इस विषय में क्या कहा है। That the devotees, like the first group of foreigners, devotees, were with Prabhupada in India. तो भारत में जब विदेशी भक्तों का प्रथम समूह जब आया था, first group, right? Yeah. And of course they didn't understand any of the Indian languages at all. और उन लोगों को कुछ भी भारतीय भाषा नहीं आती थी। And Prabhupada, some nights, he would be preaching to a group of local people, giving a class either in Bengal, sometimes Bengali, sometimes Hindi. और प्रभुपाद प्रचार कर रहे थे, कभी-कभी बांग्ला में, कभी हिंदी में। And the devotees, many of them would not come. और जो भक्त, बहुत सारे भक्त नहीं आते थे। Because they thought, we don't understand a word of it. क्योंकि वो लोग सोचते थे कि हमको तो कुछ समझ में आना नहीं है। But then Prabhupada told them, you must come, because even if you don't understand, the transcendental sound vibration will purify your heart. तो प्रभुपाद ने उनसे कहा कि आप तुम सबको आना चाहिए कि अगर आपको समझ में नहीं भी आएगा, लेकिन जो आध्यात्मिक वातावरण है उससे आप शुद्ध होंगे। And even Prabhupada said about himself, he would sometimes sit in classes by Srila Bhaktisidhanta. प्रभुपाद बताते थे कभी-कभी वह श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के प्रवचन में बैठते थे। And sometimes he just wouldn't understand what was being said. और कभी-कभी उनको कुछ भी समझ में नहीं आता था। But he didn't leave, he stayed. लेकिन फिर भी वह जाते नहीं थे और बैठे रहते थे। And when the idea came up of Prabhupada, well, the temple president suggested to Srila Bhaktisidhanta that Prabhupada could be initiated. तो जब मंदिर अध्यक्ष ने श्री भक्ति सिद्धांत से बताया कि प्रभुपाद को दीक्षा मिलनी चाहिए, then Srila Bhaktisidhanta said, yes, I have noted him. He listens. He does not go away. तो श्री भक्ति सिद्धांत ने उत्तर दिया कि हाँ, मैंने यह देखा है कि वह सुनता है और वो क्लास से जाता नहीं है। So yeah, he really appreciated that in Prabhupada, and Prabhupada understood that very clearly. तो श्री भक्ति सिद्धांत ने यह बहुत उनके इस बात पर बहुत प्रशंसा की थी, उनके इस गुण पर। And I'm sort of going off the subject. I am off the subject, but I could just mention that one time at Ultadanga Road, Prabhupada was listening to Srila Bhaktisidhanta. एक बार उल्टाडंगा रोड पर प्रभुपाद श्री भक्तिसिद्धांत को सुन रहे थे। And Prabhupada was sitting at the back next to one elderly gentleman who was partially deaf. प्रभुपाद जी सबसे पीछे बैठे थे और एक वृद्ध व्यक्ति बैठे थे जो कि जिनको थोड़ा कम सुनाई देता था। And like every minute or so, that elderly man would turn to Prabhupada and say, "What did he say?" और हर क्षण, हर एक मिनट में वह प्रभुपाद की तरफ
झुक के बोलते थे क्या कहा अभी क्या बोला उन्होंने. And Prabhupada would explain, he said this and that. और प्रभुपाद उनको बता रहे थे क्लास के बीच में ही कि ये कहा. But Srila Bhaktisidhanta did not appreciate it. और लेकिन श्री भक्ति सिद्धांत ने इसको पसंद नहीं किया. And Srila Bhaktisidhanta stopped the class. श्री भक्ति सिद्धांत ने क्लास रोक दी. And pointed to Prabhupada sitting at the back. और प्रभुपाद की तरफ इशारा करते हुए कहा. And said, "You, Babu, would you like to come and sit here?" और उन्होंने कहा कि क्या तुमको यहाँ आके क्लास देना है? Would you like to speak? क्या तुम क्लास देना चाहते हो? And Prabhupada, he's just trying to help the old man, the old devotee. प्रभुपाद तो बस एक वृद्ध व्यक्ति की सहायता करना चाह रहे थे. So he could have, said, "Well, I was just trying to help," or something like that. वो बोल सकते थे कि मैं तो सिर्फ उनकी मदद कर रहा हूँ. But Prabhupada didn't say anything, he just accepted that. लेकिन प्रभुपाद जी ने कुछ भी नहीं कहा और उसको चीज स्वीकार किया. And Prabhupada, he told his own disciples about that, how he got chastised by his spiritual master. और प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को ये बताया कि कैसे वो अपने गुरु महाराज के द्वारा उनको जैसा बोला गया. And Prabhupada told the devotees that he would regularly remember that chastisement and he relished the memory. प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को बताया कि उन्होंने हमेशा ही इस चैस्टाइजमेंट को, इस डांट को हमेशा ही याद किया और उसको आनंद पूर्वक इसको ग्रहण किया. Anand, Ajke Anand ki jai. But to relish, what's to relish? It's not. रस आस्वादन किया. Okay. All right. Anyway, sorry about that. I got off on a tangent. Any other question? Yes, Prabhu. Harikesa Maharaj, please accept my humble obeisances, Maharaj. And thank you so much for this wonderful lecture. There were so many practical points which will save us from offenses in future. Maharaj, my question is regarding our relationships with the devotees who are currently on our equal level, like our friends. So Maharaj, how do we develop deep, heartfelt appreciation for things in which they are much better than us? Like some of my friends, they have such absorption in chanting. Some are have taste for Srimad Bhagavatam, and sometimes when I see them advancing much faster than me, there is not so much happiness. I'm not as happy as I should be. So it shows there is some envy within. So how do I get over this, Maharaj? Okay. And I have a deep, heartfelt appreciation for them advancing better than me. Okay. तो जब मेरा प्रश्न है, जो मेरे इक्वल्स हैं, जो समान स्तर के भक्त हैं, उनके प्रति जब वो ज़्यादा उन्नत होते हैं तो मेरे मन में थोड़ा ईर्ष्या भाव आता है. तो इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं? Ishvara bhav, yeah. ईर्ष्या. Okay. Yes, right. What you should do, at least one thing you can do, which if you do it nicely, it works. तो एक चीज आप कर सकते हैं, यदि आप इस चीज को अच्छे से करेंगे तो यह काम करेगा. Is to develop a practice of every day or so, like whenever you're in that association, of appreciating, noting something that, he did this very nicely. तो प्रतिदिन हमें एक विशेष गुण की प्रशंसा करनी चाहिए कि हाँ, आज इसने यह चीज बहुत अच्छे से की है. And to tell them. और उनको बताना चाहिए. Yes, tell them that, like, for example, you led such a nice kirtan. It was really nice. इस प्रकार से उदाहरण कि उनको बता सकते हैं कि आपने बहुत अच्छा कीर्तन किया आज. Or whatever it is, appreciate whatever they did. जो भी उन्होंने अच्छा किया उसको उनकी प्रशंसा करना चाहिए. And if you really develop that as a regular practice, और इसकी यदि हम इसको प्रतिदिन अभ्यास करेंगे, then it'll become a habit. तब यह हमारी आदत बन जाएगी. And it'll help you to get over that
It is actually enviousness, in fact. तो ये इस सब इससे हमारे जो ईर्ष्या भाव है वह दूर होगा. Something's happening over there. It's either Jayapataka Maharaj came or it's prasadam. It's probably prasadam. So, okay. Shall we do one more? Ek or? What do you think? Ek or? Hare Krishna. Hare Krishna. Okay. Pranam Maharaj, thank you for your wonderful and informative lecture. One thing, Maharaj, I need to ask. You told about senior and junior relationships. So in that relationship, you narrated a story. In that, so I have a question. This is a story of Gopal Guru and Chaitanya Mahaprabhu. So we have heard this story, and in that story, that Gopal, that young child, it seems like he was instructing to Mahaprabhu. So how, we can understand this story? Okay. तो ये गोपाल गुरु जब महाप्रभु को उपदेश दे रहे हैं, जो कि जूनियर सीनियर को उपदेश दे रहे हैं, तो इसको हम किस प्रकार से समझ सकते हैं? Yeah, even though Lord Chaitanya, of course, is senior, but they had like a very intimate and close relationship. हालांकि चैतन्य महाप्रभु सीनियर हैं, वरिष्ठ हैं, लेकिन उनका बहुत ही घनिष्ठ संबंध था. So it was just in a very friendly mood that Gopal responded to Lord Chaitanya. और इसलिए बहुत ही मित्रता पूर्वक गोपाल ने चैतन्य महाप्रभु के साथ in a mood of service, that my Lord, you don't need to do that. सेवा के भाव से कि भगवान हे प्रभु, आपको यह सब करने की आवश्यकता नहीं है. So yeah, because of that sort of the closeness of the relationship, it didn't really. It's not like an offence on his part, like he's trying to tell the senior what to do. तो इस प्रकार से इतने घनिष्ठ संबंध के कारण यह इतना बड़ा अपराध नहीं था. So something like that. So we can take one question from a lady, from one of the Matajis in it. Yes, this Mataji here in the front. Hare Krishna Maharaj Ji. Hare Krishna. Maharaj Ji, thank you for this wonderful lecture. And please accept my humble obeisances. Maharaj Ji, my question is, you mentioned in your lecture that regarding the relationship between our junior, that we should question ourselves that do I love them, and then second, that do they love them? They love us. So my question is, if I am loving them and I am doing efforts and doing activities and to please them, but equally I am not feeling that they also love me. Right. If there are 10 girls, then some are doing and some are not doing. So my question is, how can we make relationship with them or do something for them, that there is two-way communication of love. They are also loving, and how can we develop it also? Okay, that's a good question. Oh yeah. तो मेरा प्रश्न है, जो जूनियर्स के साथ, कनिष्ठ के साथ संबंध के कारण, जैसा कि आपने प्रवचन में बताया कि हमको प्रेम करना चाहिए जूनियर्स कनिष्ठ से, और कनिष्ठों को भी अपने वरिष्ठ भक्तों से साथ प्रेम संबंध होना चाहिए. तो जैसे कभी-कभी देखते हैं कि हम अपने कनिष्ठों को प्रेम करते हैं, लेकिन कनिष्ठ भक्त हमें प्रेम नहीं करते हैं. तो हम किस प्रकार से इस संबंध में अच्छा संबंध स्थापित कर सकते हैं? Okay, yeah, the thing is this. Generally speaking, at least you should consider that even though I feel I love them, and I'm trying to sort of express it, but
it seems that I'm not expressing it in such ways that they can see that, oh, she actually loves me. तो जैसे यदि हम हो सकता है हम अपने कनिष्ठ भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन अगर वो नहीं देख पा रहे हैं वह प्रेम, तो हमें इस प्रकार से उनको दिखाना भी चाहिए कि हम उनको प्रेम कर रहे हैं. You know, it is actually a bit of a science how to deal with juniors. यह एक विज्ञान है कि कैसे कनिष्ठों के साथ संबंध बनाना चाहिए. I mean, we could go. People have written books about it. बहुत लोगों ने इस पर किताबें भी लिखी हैं. But for example, when you see they're doing good things, you have to express appreciation. एक उदाहरण है कि जब आप उनका कुछ अच्छे गुण को देखते हैं तो हमें उनकी प्रशंसा करनी चाहिए. And there are different ways of express, or sort of degrees of appreciation. और उस प्रशंसा के बहुत अलग-अलग प्रकार के तरीके हैं. Like a basic way of expressing appreciation is, oh, you did that nicely. तो एक सामान्य तरीका है कि ओह, यह तुमने बहुत अच्छा किया. Like maybe they cooked something. Like उन्होंने कुछ अच्छा बनाया. Oh yes, you cooked that nicely. तुमने बहुत अच्छा प्रसाद बनाया. But then, you know, another, like a higher degree of appreciation would be that you cooked that very nicely. You know, the aloo sabji was very good, and the gobi sabji was good, and the, what is it, chum chum. It's my favorite. Anyway, the chum chum was really good. Well done. So it's a more developed type of appreciation. एक और भी अच्छा तरीका है प्रशंसा करने का कि उनका पूरा हर चीज को बता सकते हैं कि हाँ तुमने आलू सब्जी बहुत अच्छी बनाई है, गोभी सब्जी अच्छी बनाई है, चमचा बहुत अच्छी बनाया है. And then even a higher degree of appreciation is to say the same things, but to make the point that, you know, I'm sure that the deities appreciated and Srila Prabhupada appreciated, like to bring in the deities and like that. So it's just an example of, you know, how we can express appreciation and affection, and it will have more impact on the hearts of the juniors. उससे भी एक उच्च तरीका है प्रशंसा करने का कि हम उनसे बोल सकते हैं कि आपने जो कुकिंग प्रसाद बनाया है तो उससे भगवान निश्चित रूप से बहुत प्रसन्न हुए होंगे और श्री प्रभुपाद जी भी इससे बहुत प्रसन्न हैं. तो इस प्रकार से Right, like that. And another thing which is connected, it's called, you know, usually seniors, they may catch juniors doing something wrong. तो अक्सर हम देखते हैं कि जो वरिष्ठ होते हैं वो कनिष्ठों को कुछ गलत करते हुए पकड़ लेते हैं. And then tell them, oh, you did that wrong, shouldn't do that. और फिर उनको बोल देते हैं कि यार तुमने ये गलत कर दिया, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था. But we, as a senior, we should really try to catch them doing things right. तो एक वरिष्ठ के नाते हमको उनको अच्छा करते हुए पकड़ना चाहिए. Instead of catching them doing something wrong, catch them doing something right and then appreciate it. तो उनको हमेशा ही कुछ गलत करते हुए पकड़ने की अपेक्षा कुछ अच्छा करते हुए उनको हमको देखना चाहिए और उनकी प्रशंसा करनी चाहिए. And I mean there's a whole number of things you can do, but that's a very good one. You know, if you want more, I have lists of things, and I could send you a list of things you can do, and you know, they work. They really work.
इस प्रकार से बहुत सारे तरीके हैं और अगर आपको इस प्रकार के बहुत सारे तरीके चाहिए तो मैं आपको भेज सकता हूँ और ये तरीके बहुत ही काम के हैं। ठीक है? Thank you so much, Maharaj ji. Hare Krishna. Maharaj ji, listening to your answer, one question came. Maharaj ji, if we are seeing our junior doing something wrong or something doing which is not as per our parampara, then should we point them or correct them or not? It depends. If it really matters. Oh, sorry. अगर हम अपने जो कनिष्ठ को कुछ गलत करते हुए देखना चाहिए तो देखते हैं गलत करते हुए तो क्या हमें उनको करेक्ट सही करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? Yeah, if it really matters, then you'll have to. If what they're doing wrong is important, you'll have to. हाँ, निश्चित रूप से हमें उनको सुधारना चाहिए अगर वो कुछ गलत करते हैं तो। If it's just a small thing, better not to. अगर कुछ बड़ी गलती करते हैं तो हमें निश्चित रूप से उनको सुधारना चाहिए और अगर कुछ छोटी गलती करते हैं तो हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना चाहिए। You don't have to tell them, you're doing it wrong. इस प्रकार नहीं कहना चाहिए कि ओह तुमने बहुत गलत कर दिया। Just suggest to them there may be a better way to do it. So और भी कुछ तरीके हो सकते हैं उनको सुधार करने के लिए। Because the emotions, particularly with juniors, the emotions are very important. क्योंकि जो कनिष्ठ भक्त होते हैं उनकी भावनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। You don't want to appear to be like chastising them. I mean, particularly with juniors, chastisement usually does not work. तो सामान्यतः कनिष्ठ भक्तों को डांटने से काम नहीं बनता है। But more like friendly suggestion of how you could do it even better, that'll be more effective. मित्रता पूर्वक उनको सलाह देने से ज़्यादा अच्छे से वो उसको स्वीकार कर सकते हैं। Okay, so we'll finish here. We should finish here, right? Yeah. And because prasadam takes precedence, so I don't want to stop you. I don't want you to offend Prasad on my behalf. Thank you. Hare Krishna, Srila Prabhupada.